Hello.
कहीं गए नहीं यार। चलो चलो। वो क्या करता वहां पे वैसे जितना पहले इसलिए यहाँ वैसे कंपनी में करते हैं जो। बंद है कि टाइप आ गया। आ गया बीमार है। हाँ, हमारा टाइगर कहाँ गया? कहाँ बैठा हुआ है? अरे, चलो तुम्हारे साथ जा रहे हैं तुम्हारे साथ। रमेश काय नहीं कर रहे हैं कुछ क्या गए हो सर जी। और क्या।
Mm-hmm.
Hello. Hello, hey, hi guys, good evening. Hello. Rajesh, you are audible? Good evening, sir. Very good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Nidesh. How are you, sir? Okay, so so far we were into the material master, I think, if I believe. Hello, guys, am I audible or not? Please respond. Good evening, sir. You are audible. Audible, sir. Good. So I'm saying we were studying material master, if I am not wrong. Yes. Okay. So let's complete the material master and बाकी master stop करते हैं. We share my screen. I hope my screen is visible to you. देखो, तो what I told is that हमारे जो especially for PP production planning consultancy, the most important views in the metal master are MRP 1, 2, 3, 4 and work scheduling. और work scheduling क्या है, which is relevant for FG and SFG. Otherwise, for RM and PM, this is not relevant. बाकी these are common. Okay. Let's go inside. So as I think we covered this one. MRP types and this one we have covered. We were in this one actually. Yeah. So here the main thing is depends on the start from here, which is make strategy. So strategy basically means that like how a company or a client is basically producing their material. Is it make to stock or make to order? What do you mean by make to stock and make to order? That we already have communicated. Can anybody explain me what exactly is the meaning of make to stock and make to order? Rajesh, maybe anyone else? सर मैं टू स्टॉक में हम जो पहले से बना के रखते हैं मटेरियल. जो सॉरी क्या? सर मैं टू स्टॉक मतलब जो मटेरियल पहले से ऑलरेडी बना के रखे हैं स्टॉक में अपने. करेक्ट, ठीक है. एंड मेक टू ऑर्डर? मेक टू ऑर्डर जो कस्टमर का आने के बाद हम वाटर प्रोडक्शन भी करते हैं, प्लानिंग करते हैं. एग्जैक्टली. सो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बेसिकली ऑर्डर प्लानिंग करते हैं एंड देन प्रोडक्शन करते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली वी गिव इट टू कस्टमर. उसको बोलते हैं हम स्ट्रेटजी दिस मेक टू ऑर्डर, राइट? परफेक्ट. जी So in general, there are the main two things are we use. बाकी देखो ऐसे बहुत चीजें हैं, ऐसा नहीं है. Like जैसे नए नए concept use हुए हैं. These are the few. So one is like make to order, ठीक है. One is make to stock. Second is make to stock. Third is prepared with assembly. Prepare pre-planning without assembly. So pre-planning with assembly, pre-planning without assembly का क्या मतलब है? Let me just in brief overview is that. So pre-planning means that okay, you know it that a particular order whenever like suppose a car will be manufactured, okay. Suppose your company is manufacturing car. And once an order will come, or maybe in either of the case, either make to stock or make to order. If you go like make to order, suppose have a customer order आता है, and then what you do is that you at least pre-assemble a plan at least till a basic level, and remaining things to like what you do is that to maximize the delivery time to make sure that you can deliver the customer as soon as possible, even though it's a customizable order. What you do is you whatever you feel that the basics like basic what can be the basic things in the car, like the tire, the chassis, the normal mounting, the tire wheels, assembly, and all these things you do that. Suppose the color things, maybe that these certain things, customer says you need something else. Maybe they need a different level of different kind of wheels. Some of them like not 16 inches of 18 inches, 19 inches, something like that. So these things are not take that much time. So what you do, you just deassemble it and assemble this required tire and you just give it to the customer. So in this case, you pre-planning is that you already plan something that, okay, what kind of order customers generally receives are like this. So according to that, you already order the raw material already with us. That, okay, these kind of things I will need in case if customers give such orders. Or as per your past demand and that's also you can plan. That, okay, in past according, this is what the kind of cars customer orders.
like 18-inch of tire they need. Generally, most of the people who are young and kind of who likes the off-roading and all, those people just like plan to order the kind of car which is off this 18 inches tire and all, not the normal standard 16-inch and all. So for them, they order they already pre-plan. Okay, these tires must be available in such case if you receive such order. So जब order आते हैं, the tires are available. So what they do, they just need to get the issue करते हैं अपना this tire of 18 inch and deassemble करते हैं 16 inch को assemble करते हैं 18 inch and they just give it to customers. That's how they do it. So these are the kind of example that could be for these cases. But in general, we use this make to stock and make to order. Okay. So for make to stock and make to order, these are the strategies we have. So the 10, 20, 25, 40, 70, these are the different strategies. So 10 is make to stock. 10 is purely make to stock. Means that once you use 10, what system does is, in MD61, there is a T code where we enter our sales and demand planning. That how much do we want to actually plan and produce in make to stock case. So because it is not dependent upon this customer, right? So if customer पे dependent नहीं है, then what exactly we need to do is हमें पता होना चाहिए कि हमारा past sale and consumption के according how much the plan and production we need to do. Okay, so according that there's a T code, there's a planning table where we enter the data, like how much we want to manufacture in this case. But in the case of make to order, what happens, that we completely dependent upon customer order. Like suppose a customer orders that I need like 10 cars. Okay, so it depends on them. Like customer can say 5 only, customer can say 50, customer can say 10, customer can say anything. For every car, customer can say I want customizable. So it all depends upon customer and requirement, right? So that's why this make to order is purely dependent upon the sales order. How much sales order we are receiving from customer. Based on that only we will do the planning. Based on that only we will procure the kind of raw material if you don't have it. If you already have it, that's wonderful, and then we'll produce it. So that's how it happens. This is how a material gets segregated. Differentiate होता है material का कि भाई ये material जो हमारा है FG जो है ये make to stock में fall होगा या make to order में fall होगा. इसका manufacturing cycle है वो कैसा रहेगा. This depends upon the strategy group. Okay. I hope this was clear. Then comes the consumption mode. So consumption mode का basically meaning क्या होता है, that period, like how do you want to consume the requirement. So suppose in make to order, आपके पास एक sales order आया है, आने के देखो generally क्या होता है, as far as what the practical scenario is, generally we receive the sales order of next coming 3 months. Like what happens is in general that 2 months is a firm plan we receive and 1 month is tentative. So first month is of course firm and fixed plan. कि जो भी है जितना भी quantity है, that is the fixed one that yeah you will have to produce and we will want that. But second month or third month in generally are tentative. Or some companies do is like okay 2 month का plan हम आपको fix देते हैं, firm देते हैं, last third month plan would be tentative plan. कि हम आपको बताएंगे 2 महीने बाद according to sale and demand. So this is how it generally happens. So based on what happens is like how do we want the planning to happen? We can tell system. Okay, do you want the backward planning means ये आज की डेट पे अगर आप MR print कर रहे हो, you are running the planning, you are doing the planning today on the today's date. What will happen? System will consider only the requirement which already came in the past. मतलब आज की डेट से पहले की जितने भी रिक्वायरमेंट आई होगी सिस्टम वो कंसिडर करेगा. आज के आगे जो आने वाला है कोई फर्क नहीं पड़ता उसको. मतलब फ्यूचर डिमांड जो कस्टमर ने दी भी है, he will not plan anything for them. This is the meaning of that. If it is the backward and forward, then it means that okay backward भी planning करेंगे plus forward भी planning करेंगे. Similar way forward means only forward. आज की डेट से आगे के पीछे का कुछ नहीं. Forward backward means पहले forward का फिर backward का. So this is the meaning of that. Now what is the meaning of how much? Like backward means how much backward and forward means how much way forward. So here after using the selection, like suppose you want to select the backward. So backward means system will ask you okay how much backward? These are the days. Like these are the 2 feeds for that. Keep Indian days डालते हैं like how much days forward. If you says take 15 days backward, as of now let's select backward one now. So 15 days backward means that only till 15 days in the past system will consider the requirement in the planning, not more than that. ये आपका सोच सकता है बैकवर्ड में 1 महीने का ऑर्डर पड़ा है पहले से पेंडिंग पड़ा है, बट आप चाहते हो कि नहीं अभी जो प्लानिंग कर रहा हूँ मैं ओनली 15 दिन के हिसाब से करूंगा, नहीं पीछे वाले ना कि पूरा जो बचा सारा कुछ. But if you don't give a date, it will do all the planning for all the days. If you want to plan maybe suppose forward and backward, like suppose backward and forward, कि पहले backward and forward. So backward means how much days backward? 15 days backward and 30 days forward.
सो नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग भी कर रहे हैं और बाकी 15 दिन के पीछे का जो पेंडिंग है दैट आल्सो वी आर प्लानिंग, दैट आल्सो वी कैन डू. सो दिस इज इट वेरीज एज पर द डिमांड एंड कस्टमर, लाइक एज पर रिक्वायरमेंट. Then comes the availability check. Availability check is an important factor again. Availability check का meaning होता है that like system can check the material, like how much material is available in a stock. Suppose this we enter in every material mass, like FG में भी करते हैं, SFG, RM, PM, raw material, packaging material सब में enter होता है ये. अब कैसे होता है, जब आप बॉम्ब बनाते हो, बिल ऑफ मटेरियल मास्टर बनाते हो, उसमें क्या करते हो आप कि FG को बनाने के लिए कौन सा ऐसा आपको SFG चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कौन सा पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, आप सब डालते हो बॉम्ब में. तो सिस्टम क्या करता है, जब अपन एमआरपी रन करते हैं ना तो FG की करते हैं, फिर रन द एमआरपी ऑफ FG एंड सिस्टम व्हाट डज, सिस्टम एक्सप्लोर द बॉम्ब. सिस्टम क्या करता है, चेक्स द बॉम्ब एंड इन द बॉम्ब सिस्टम चेक्स एवरी कंपोनेंट. ओके, टू मैन्युफैक्चर दिस FG हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड, दैट सिस्टम गेट्स फ्रॉम द बिल ऑफ मटेरियल. अब उस बिल ऑफ मटेरियल में सिस्टम देखता है कि अच्छा ईच कंपोनेंट की कितनी कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, लाइक फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट हाउ मच क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड to manufacture that particular FG. So based on that, system checks for this material, like material A, raw material A, the quantity required is 10. How much is available in the stock? Suppose 15. So it means we have sufficient stock. If 15 है, 15 is available, 10 is needed. So it means that we already have more than what is required. So that is sufficient. System will not do any planned order creation or purchase execution. कुछ नहीं बनाएगा. Like there is no planning will happen for this. Because everything is available so sufficiently. If suppose for raw material B or for any material B, if you have this one, हेलो so you have, hello, सर, प्लानिंग वाला टैब को रिपीट कीजिए प्लीज, थोड़ा प्लानिंग. planning वाले टैब को हाँ हाँ, वो रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा समझ में नहीं आया. किस वाले को, ये जो स्ट्रेटेजी ग्रुप है ना, this one. एंड हाँ, ये थोड़ा सा डिटेल में बताइए, बैकवर्ड और कंजम्पशन और. बैकवर्ड कंजप्शन का सिंपल सा मीनिंग है, हाँ बैकवर्ड कंजप्शन का मतलब क्या होगा कि आज की डेट से अगर आप आज प्लानिंग रन कर रहे हो, ठीक है, सिस्टम में, तो आज के दिन से पहले का जो भी बैकवर्ड में आपके पास जो रिक्वायरमेंट पड़ी है, आप उसकी प्लानिंग कर रहे हो. मतलब आज से पहले जितने भी ऑर्डर होंगे पेंडिंग है या जो भी कस्टमर के ऑर्डर बचे हुए हैं, पहले आप उनकी प्लानिंग करोगे, उसको प्रोडक्शन करोगे, उनको कस्टमर को डिलीवर करोगे. दैट्स मीनिंग ऑफ बैकवर्ड. अब बैकवर्ड मतलब कितने दिन बैकवर्ड, मतलब हो सकता है 15 दिन बैकवर्ड, 10 दिन बैकवर्ड, 1 महीने बैकवर्ड या 30 दिन बैकवर्ड. तो वो डेज आप दे आज सकते से करंट डेट से पीछे की तरफ. करंट डेट से पीछे. बैकवर्ड मीन्स करंट डेट से पीछे की तरफ, फॉरवर्ड मीन्स ओके करंट डेट से आगे की तरफ. ओके ओके. दैट्स वेरी सिंपल भाई. अगर जैसे मैंने आपको क्या बताया, एग्जांपल दिया आपको कि इस महीने में आपका कस्टमर ने ऑर्डर दिया, आपको 3 महीने का प्लान दिया कि इस महीने हाँ का हाँ फिक्स है, इस महीने का 1000, अगले महीने का 2000, उसके अगले महीने का 3000, ठीक है. लेकिन कस्टमर आपको बोलता है कि अभी आप जो प्लानिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन करोगे ना, वो 1 महीने का करना होंगे, बाकी 2 महीने का भी कुछ मत करना. हम आपको इस महीने खत्म होने से पहले पहले वी विल लेट यू नो कि एक्चुअली ये इतना ही बनाना है या कुछ एडिशन या डिलीशन है इसके अंदर, ठीक है. ओके. तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्लान हम पूरा सिस्टम में डाल देंगे. लेकिन जब हम एमआरपी रन करेंगे तो वी कैन लेट इस एमआरपी नो कि भाई आपको प्लानिंग जो करनी है वो ओनली 30 दिन की करनी है, मतलब 1 महीने की करनी है. और वो कब करनी, फॉरवर्ड में, कि भाई आज के दिन से आगे की जो 30 दिन है तो उसकी प्लानिंग करनी है हमको, ना कि पीछे की, ना आगे की. 30 दिन से आगे की कोई प्लानिंग नहीं करनी है. भले हमारे पास प्लान जो है वो 90 दिन का आया हुआ है. गेटिंग माय पॉइंट. ओके. यस. दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल दैट बेसिकली. ओके. गॉट दैट? ओके. एंड अवेलेबिलिटी चेक का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो भी रॉ मटेरियल है, पैकेजिंग मटेरियल है, सेमी फिनिश गुड है, फिनिश गुड है, उनका अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है. जितना स्टॉक अवेलेबल है उसको हमें प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट. जो नहीं है उसको प्रोड्यूस करेंगे ना. कि अगर 1000 चाहिए, 1000 में से 500 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो कस्टमर को चाहिए, हाँ. देन व्हाई वी विल प्रोड्यूस 1000 क्यों प्रोड्यूस करेंगे, हम 500 ही करेंगे ना फिर. सो दिस इज द यस. मीनिंग ऑफ. ये क्या करता है ना, ये सेटिंग चेक करता है कि स्टॉक में कितना पड़ा है हमारे पास, है कि नहीं है. है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है. नहीं है तो उसके हिसाब से, या अगर है तो जितनी रिक्वायर्ड है, सपोज 1500 रिक्वायर्ड है, अवेलेबल 1000 है, तो 1500 माइनस 1000 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 500. तो ओनली 500 का वो ऑर्डर लगाएगा, 500 के लिए ही प्लानिंग करेगा, क्योंकि 1000 उसके पास अवेलेबल है, ऐसा. ठीक है, ये हो गया इसका. देन कम्स टू MRP4. MRP4 में सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये वाला टिक, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव. इसका मीनिंग क्या होता है गाइस, देखो भाई, एक सेल्स ऑर्डर आया आपका कस्टमर का, ठीक है. यू वांट कि सेल्स ऑर्डर स्पेसिफिक मेरी प्लानिंग हो. मतलब एक कस्टमर ने बोला कि दे नीड 1000 कार्स ऑफ इन पर्टिकुलर डिफरेंट कैटेगरी.
and a different customer says, I need a car of some different category. Same model, same color, but something or other is different in their cars. Maybe the alloy wheels are different, maybe something else is different, some or other uniqueness is there. So what we can do is, we can, for different customer, we can plan this order. Like जो भी customer order, sales order आएगा, customer order आएगा, वो अलग-अलग plan होगा, अलग-अलग उसमें customer order sales order tag होगा. वो कहाँ से होगा? इसमें. अगर हम requirement को individually consider करेंगे, कि भाई तेरी requirement है, customer A की requirement है एक, तो वो अलग उसको consider करेगा system, B की अलग करेगा. लेकिन अगर उसको collective कर देता हूँ, या फिर मैं इसको collective कर देता हूँ, या फिर ये कर देता हूँ कोई भी, तो collective का मतलब क्या होता है कि मेरी customer A की requirement आई 1000 की, B की आई 2000 की, C की आई 3000 की, टोटल कितनी होगी मेरी 6000. तो 6000 के हिसाब से जो भी रॉ मटेरियल चाहिएगा, जो भी प्लानिंग चाहिएगा, सिस्टम क्या करेगा, उसका एक ही टाइम पे प्लानिंग करेगा, एक ही कंबाइंड रॉ मटेरियल जितना रिक्वायर्ड होगा. भाई सपोज कस्टमर ए के लिए रॉ मटेरियल चाहिए 1000, कस्टमर बी के लिए 2000, कस्टमर सी के लिए 3000. तो उस एक रॉ मटेरियल का सिस्टम एक ऑर्डर लगाएगा ऑफ 6000 क्वांटिटी. बट इफ यू डू इंडिविजुअल ईयर, सिस्टम क्या करेगा, 1000 एक ऑर्डर लगाएगा 1000 के लिए, दूसरा ऑर्डर नंबर 2 लगाएगा 2000 के लिए, ऑर्डर नंबर 3 लगेगा 3000 के लिए. तो सेपरेट 3 ऑर्डर लग रहे थे, सेपरेट प्लानिंग हो रही है, ट्रैकिंग मिल रही है प्रॉपर. बेसिकली ट्रैकिंग पर्पस होता है ये, कि आपने जो चीज प्रोडक्शन किया, प्लानिंग किया, प्रोक्योरमेंट किया, सो दैट इज बेसिकली फॉर व्हाट रीजन, किसके लिए किया था, किसके बिहाफ पे किया था, व्हाट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ दैट. तो ये चीजें अलग अलग भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं. दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट. आई होप इट वाज क्लियर. Next and final thing is production version. So production version is one of the master. I'll tell you about this. Just as of now, remember that in Material Master, we have the assignment of production version automatically here. और जैसे assignment हो जाता है यहाँ पे टिक हो जाता है automatic. I'll tell you how and when it happens later. बस ये याद रखो. ठीक है. Then last and final is work scheduling. Work scheduling में आता है production supervisor, like for a material, इस material के लिए who is the person or who is the group who will, the production supervisor कौन है इसके लिए. So we can assign a number or name or anything, like so one is the one who will take care of this material as in from production perspective. So we can give a name, we can give a group number, we can do anything, basically whatever you want. You can create this accordingly. Similar way, we have one more important thing is the production scheduling profile. सर सॉरी सर, राजू बोल रहा हूँ. हाँ जी. सर इसके पहले की टर्म क्या बताया आपने, प्रोडक्शन सुपरवाइजर. नहीं उसके पहले की, और वर्क शेड्यूल के पहले की. ठीक है. कहाँ पे, यहाँ पे प्रोडक्शन वर्जन. प्रोडक्शन वर्जन. हम्म. प्रोडक्शन वर्जन नहीं, मास्टर एक. आई लेट यू नो राजू, अभी थोड़ी देर बाद में बिना इसका मास्टर Okay, पढ़ेंगे. ठीक है सर. क्या, चलो. तो ये हो गया सुपरवाइजर. सबको पता है यार, रीजन सुपरवाइजर होता है कंपनी में, आपकी पोस्ट होती है. सो वी कैन गिव द नेम ऑफ दैट पर्सन, कि हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल. तो इस किसी भी मटेरियल का हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा प्रोडक्शन के रिलेवेंट, जिसको हम पूछेंगे, भाई पकड़ेंगे कि भाई हाँ इसमें गलती हुई है, तो कुछ भी हुआ है तो हु इज दैट वन पर्सन. कल को अगर कुछ इशू आता है और यहाँ पे उसका नाम है सोहन का नाम है, लाइक सपोज मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया सोहन ये वाला, या अभिषेक कर दिया. ठीक है. तो अगर कल को इशू आता है कुछ मटेरियल में, तो आई आस्क अभिषेक कि भाई अभिषेक क्या इशू हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो सब आई आस्क हिम कि भाई तेरी गलती है, यू आर द वन हु प्रोड्यूस इट, तो समथिंग और यू हैव डन रॉन्ग. तो इसलिए हम यहाँ पे रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, ऑडिटिंग पर्पस के लिए डालते हैं. देन कम्स द शेड्यूलिंग प्रोफाइल. शेड्यूलिंग प्रोफाइल का काम होता है कि कौन सा ऑर्डर टाइप बनना है, इसका क्या बनना है. तो वो भी चलो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा टेक्निकली. तो ये 2 फील्ड है इंपॉर्टेंट. तीसरा होता है एक प्रोडक्शन लोकेशन, प्रोडक्शन एरिया. ये हम MRP2 में डालते हैं जनरली, ये आपको बताया था मैंने, यहाँ पे डालता है. ये देखो यहाँ पे. तो क्या होता है कि जो प्रोडक्शन की लोकेशन कौन सी है, लाइक जनरली क्या होता है, FG का स्टोर है या SFG का स्टोर है, वो अलग होता है. एंड द एरिया वेर यू प्रोड्यूस इज डिफरेंट. प्रोडक्शन लोकेशन, प्रोडक्शन एरिया बेसिकली. So from which location to which location you will transfer the material and where you will produce. So जो प्रोडक्शन की लोकेशन है इस मटेरियल की, वो ये है 771 है. That's the definition of that. Simple. कि कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है इसका और कहाँ स्टोर हो रहा है. तो स्टोर होने की लोकेशन होगी ये वाली. ठीक है. ठीक है. और प्रोडक्शन एक लोकेशन होगी वो वाली. ऐसा. So this is it for Material Master. I hope there is no confusion so far. Any confusion guys here, Material Master? हेलो. हाँ जी. सर उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग 2 रहेगा ना शायद. हाँ जी, सब रहेंगे, लेकिन वो अपने काम के लिए नहीं है. फ्रॉम प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव आर इम्पोर्टेंट पार्ट इज ओनली दीज 4 व्यूज. ओके. मतलब दैट इज बीइंग टेकन केयर, हम रखते हैं वो, लेकिन वो क्या होता है कि वो फाइनेंस अकाउंटिंग व्यूज है ना, वो फाइनेंस वाला बंदा टेक केयर करता है.
कि प्राइसिंग कैसे रखनी है, क्या होगी इसकी, कैसे होगी, क्या टेक केयर करना है, वो क्वालिटी वाला क्वालिटी का करता है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का करता है, सेल्स वाला सेल्स का करता है, मटेरियल मैनेजमेंट वाला एमएम वाला एमएम का करता है। तो ऐसे एक मटेरियल मास्टर को बनाने में कम से कम 7 से 8 डिपार्टमेंट का अपने अपने इनपुट लगते हैं कि कौन क्या चाहता है, कौन कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, पूरी प्लानिंग होती है, फिर मटेरियल मास्टर बनता है सिस्टम में। ठीक है, दैट हाउ इट ओके हैपेंस। सर। लेकिन अब जो मास्टर बता रहा हूँ मैं, दैट्स प्योरली प्रोडक्शन रिलेटेड, लाइक टी कोड, वन इज बिल ऑफ मटेरियल। ओके, सो बिल ऑफ मटेरियल के लिए द टी कोड इज CS01। ओके, CS01 is the T code for bill of material. So here it is, completely dependent. Again, let me repeat you. CS01 is the T code for bill of material. CS02 to change and CS03 to display. ये तो T code हो गया। अब once you click CS02, ये स्क्रीन ओपन होती है, create bill of material, create material BOM। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि BOM या प्रोडक्शन के जो भी मास्टर बनते हैं, before that it is very important that you have a material master created and plant available। material master and plant होने चाहिए आपके पास। जब तक material master आप नहीं बनाओगे, ये material master होना चाहिए। material master आपका नहीं होगा अवेलेबल तो आप नहीं बना पाओगे, वेरी सिंपल। ठीक है, आप बॉम्ब बना रहे हो तो आपके पास होना भी चाहिए ना कि बॉम्ब किसका बनाना है, कौन से FG मास्टर का बनाना है या कौन से सेमी का बनाना है, उसका आइटम कोड होना चाहिए आपके पास पहले। ठीक है, और सिमिलर वे उस आइटम के साथ साथ में कौन से रॉ मटेरियल यूज करना है, तो सारे रॉ मटेरियल के, पैकेजिंग मटेरियल के सबके आइटम होने चाहिए। तो मटेरियल मास्टर ऑफ एनी लाइक FG RM PM SFG सबका मटेरियल मास्टर ग्रेड होना चाहिए। इट्स अ प्रीरिक्विजिट। देन अब मटेरियल मास्टर बोल मेरे को 501 कोई मटेरियल है मेरा, उसका बनाना है, तो उसका कर दिया मैंने। उसके साथ मैंने क्या किया, अपना प्लान डाल दिया। ठीक है, ओके, प्लान डाल दिया। तो ये चीज तो कॉमन है अपनी, जो भी मटेरियल प्लांट और अपना डालना है अपने यहाँ पे। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग डिफरेंट। व्हाट इज कि बॉम्ब का यूसेज क्या है। लाइक जनरली क्या होता है, आप कोई भी मास्टर बनाते हो या कोई भी आप एक चीज बनाते हो सिस्टम में, उसका एक यूज तो होता है ना कि आप कहाँ यूज करोगे, हाउ विल यू यूज दैट एंड वेयर विल यू यूज दैट। So here in general, this is that there are many uses. Look, let me tell you. So for production relevant, सबसे most important is this one, first one, of course, production। जो मैं बॉम्ब बना रहा हूँ, this इसका जो यूज होगा प्रोडक्शन में होगा, कोई भी मटेरियल प्रोडक्शन करने में होगा। ठीक है, लाइक इस मटेरियल प्रोडक्शन करने में इसका यूज हो रहा है, तो ये प्रोडक्शन रिलेवेंट है। अगर मैं इसी मटेरियल को प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ अभी, दिस इज एन R&D, अभी ओनली दिस इज इंजीनियरिंग एंड डिजाइन फेज में ही है, बट मुझे इसका बॉम्ब चाहिए फॉर R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। So I can create a bomb for engineering and design. This is for R&D. ठीक है, so R&D वाले डिपार्टमेंट के लिए जो बॉम्ब बनते हैं वो इसके लिए बनते हैं। यूसेज 2 आता है उसका, प्रोडक्शन जिसका प्रोडक्शन होता है मटेरियल का, मास प्रोडक्शन वगैरह, उसके लिए 1 आता है। थर्ड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब आप कहीं भी यूज करो, चाहे कॉस्टिंग में, प्रोडक्शन में, रिसर्च डेवलपमेंट में, R&D में, कहीं भी यूज करो। दिस इज कॉमन फॉर दैट। जनरली कम यूज होता है, जनरली प्रोडक्शन यूज होता है, मेनली R&D वालों की R&D यूज होता है। ठीक है, प्लांट मेंटेनेंस इज समथिंग डिफरेंट अगेन, कि आपको मेंटेनेंस के लिए भी बॉम्ब बनते हैं अलग से, लेट्स नॉट गो टू दैट। तो उसके लिए अलग बॉम्ब बनता है, उसकी अलग कैटेगरी है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वालों के लिए अलग बॉम्ब बनता है, बाकी अलग अलग है सब। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम का होगा वो होगा प्रोडक्शन, तो हम ये यूज करेंगे ओनली 1। ठीक है, फिर वैलिड फ्रॉम जो डेट होती है वो हमेशा सिस्टम आज की करंट डेट उठाता है, अपने आप उठाता है, बट यू कैन यूज द डेट। हाँ जी, बट यू कैन यूज द डेट फ्रॉम पास्ट एज वेल। मतलब अगर मेरा आज की डेट सिस्टम ऑटोमेटिक ले रहा है 23 तारीख, राइट, टुडे इज 23rd June, बट आई वांट टू वैलिड दिस फॉर्म फ्रॉम 1st June, कि मेरे को 1 तारीख से वैलिड होना है बॉम्ब को इसको, तो आई कैन यूज दैट। सिस्टम आपको मना नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम लेता है वो हमेशा करंट डेट लेता है। एक तो हो गया ये। फिर देखो 2 चीजें, बॉम्ब के 2 सेक्शन होते हैं। बॉम्ब क्या मास्टर, एक होता है बॉम्ब आइटम लेवल, एक होता है हेडर लेवल। हेडर लेवल जो होता है वो हमेशा जिस मटेरियल का बॉम्ब बना रहे हो आप, okay, the material for which you are creating a bomb, header level is for that material. Means so this is the button for header level. Look, so whenever you go inside the bomb, like suppose if I come back again, so enter. So once you enter, no, then system directly goes to item level bomb, the general item overview. Okay, this is the item level where you will enter the components. कितने components चाहिए, how many components will be required, each component की quantity कितनी होगी। ठीक है, that there he will give here. अब to manufacture this one, मतलब इस 501 मैन्युफैक्चर को बनाने के लिए हाउ मेनी कंपोनेंट्स यू रिक्वायर, कौन से चाहिए, हाउ मच क्वांटिटी यू नीड, ऑल दीस थिंग्स भी एंटर हियर। बट अब इससे बॉम्ब की साइज क्या होगी, बेस क्वांटिटी क्या होगी, मतलब कितने इसके बनाने के हिसाब से बॉम्ब बना रहा हूं मैं। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द हेडर।
So once you click on this button, look, ये स्क्रीन ओपन होती है। यहाँ पे क्या आ रहा है, हेडर ओवरव्यू। एंड देखो अगेन गो टू आइटम, या आइटम क्लिक करोगे, दिस अगेन गो बैक टू। सो दिस इज हाउ यू कैन नेविगेट टू टू स्क्रीन्स, हेडर एंड हेड का जो सिंबल है वो हेडर के लिए है, और आइटम के लिए आइटम लिखा हुआ अलग से। सो ये हो गया एक सिंपल। अब हेडर में क्या मतलब आता है, देखो चीज है, यहाँ पर आपका मटेरियल आ गया, ये प्लांट आ गया, ये बॉम्ब का कैटेगरी, नथिंग रिलेवेंट, ठीक है। देन आता है टेक्निकल टाइप की, अपना बॉम्ब किस टाइप का है, मल्टीपल बॉम्ब बन रहा है, बिकॉज यू नो इट्स नॉट सिंगल बॉम्ब। मल्टीपल बॉम्ब क्या होता है कि सिंगल बॉम्ब मतलब एक ही बॉम्ब बन रहा है, मल्टीपल मतलब कि आप एक ही मटेरियल को बनाने के लिए आपका एसएफजी भी है उसमें, तो एसएफजी का अपना एक बॉम्ब होगा, इसलिए वो अलग अलग बॉम्ब आपके जमीन यूज करते हैं, तो इसके अंदर मल्टीपल बॉम्ब, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, यू कैन गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉम्ब, ठीक है, व्हाटएवर यू नीड। सर सॉरी, हाँ जी। टेक्निकल टाइप एक मिनट बताइए ना सर, फिर से रिपीट कीजिए। टेक्निकल टाइप सिंगल और मल्टीपल लेवल क्या होता है, सिंगल बॉम्ब और सिंपल बॉम्ब, मल्टीपल बॉम्ब क्या होता है। सिंपल बॉम्ब इज ओके, देखो यार एक ऐसा कोई मटेरियल है, ठीक है, जिसमें आपके कुछ एसएफजी वगैरह यूज नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा कोई मटेरियल जिसमें आपने डायरेक्टली आरएम यूज किया, पैकेजिंग मटेरियल यूज किया और वो बन गया, कोई ज्यादा असेंबली वगैरह नहीं है, सब कार है, मोबाइल है, ये ऐसे आइटम है ना, जिसमें इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स है जो अलग से बनते हैं पहले, जिनको बनाने के लिए अलग से रॉ मटेरियल यूज होता है। सेमी फिनिश गुड क्या होता है, अच्छा व्हाट इज सेमी फिनिश गुड एंड फिनिश गुड गाइस, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। राजू व्हाट इज सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड क्या सर? सेमी फिनिश गुड एफजी, भाई। मतलब एफजी बनाने के पहले जो प्रोसेस है एसएफजी है, उसके बाद तो एफजी में एसएफजी वो कन्वर्ट एसएफजी होता बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, राइट। उसका है। अलग जी बॉम होता है, अपना अलग मास्टर होते हैं, अलग जी प्रोडक्शन साइकिल होती जी है, जी राइट। तो बस वही है जी जी। मल्टीपल बॉम का मतलब होता है कि आप पहले एसएफजी बना रहे हो, अलग अलग एसएफजी बना रहे हो, फिर उस एसएफजी को आप एफजी में यूज कर रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ ओ मल्टीपल बॉम। ओके ओके। सिंपल बॉम में या सिंगल बॉम में के लिए होता है कि आप एक ही, ऐसा कोई आपको कोई एसएफजी नहीं है उसमें, सिंपल आपने आरएम अच्छा, कंज्यूम किया, पैकेजिंग यूज किया और आपका बॉम्ब बन गया, सिंपल, एक सिंपल ओके बॉम्ब ओके ओके। मल्टीपल में एसएफजी यूज होता है और सिंगल में एग्जैक्ट, एसएफजी यूज नहीं होता। मतलब लेवल होता है ना बॉम्ब का, बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल, ओके मतलब ओके बहुत सारे लेवल से छोटे ओके छोटे अंदर नीचे, ओके सर। भाई एक बॉम्ब के अंदर और बॉम्ब आया, बॉम्ब के अंदर और बॉम्ब आया, ऐसा। तो वो ओके डिपेंड करता है कि अगर एक बॉम्ब एक एफजी के अंदर एसएफजी है, तो एसएफजी का अपना बॉम्ब होगा, उस एसएफजी के अंदर अगर और एसएफजी हुआ तो उसका अलग बॉम्ब होगा, ऐसे करते करते लेवल हो जाते हैं अलग अलग, ठीक है, इसलिए उसको मल्टीपल बॉम्ब कहते हैं, कि अपने उसके बॉम्ब के अंदर बॉम्ब है अलग अलग, ऐसे कि पहले आप तो एसएफजी एक ये बनाओगे, एसएफजी बी बनाओगे, फिर उस एसएफजी बी को यूज करोगे एफजी में, फिर एफजी जी बनेगा सर आपका, जी इसलिए उसको मल्टीपल बॉम्ब कहते हैं, जी सर जी। तो ये ठीक है। सर ये बॉम्ब ग्रुप वही होता है क्या, बॉम्ब ग्रुप भी उसके बाद जो नहीं टैब अलग है चीज है, बैन बॉम्ब, दिस इज डिफरेंट, ये अलग है? अलग है, ओके बॉम्ब ग्रुपिंग इज डिफरेंट थिंग, ओके। बता दीजिए सर वो भी। डोंट गो टू दैट, जनरली यूज नहीं आता है, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। देखो गाइस आई विल इंश्योर दैट कि आप कहीं पे भी कहीं भी नॉलेज का कुछ इशू नहीं आएगा, दैट आई कैन अश्योर यू दैट whatever I'll tell you that will be more than sufficient for us. In my career of so far like 8 to 10 years, I have never used this field actually, to be honest, because सर these are मुझे the kind अभी of fields which are there is in advanced जो होती है आपके पास, but generally grouping bomb को यूज नहीं करता है। हाँ जी बताओ क्या ओके। बोल रहे थे। सर मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो एमआरपी 2 में शायद अपन ग्रुपिंग, मैंने एफजी का मटेरियल डाला तो उसमें ग्रुपिंग साइज बॉम्ब ग्रुप बोल रहा था वो, तो नहीं उसमें बहुत सारी लिस्ट। वो बॉम्ब ग्रुप नहीं बोला, वो एमआरपी ग्रुप बोल रहा होगा आपको, मटेरियल मास्टर में एमआर बॉम्ब ग्रुप पे है ही नहीं, in Metal Master there is no something called bomb or group or something, nothing is there, I can ओके show you, ओके I can सर। show you that। ओके सर, आई विल चेक सर। हाँ, अगर फिर भी कुछ हो तो बताना मेरे को, आई आंसर यू, बता दूंगा तुम्हें कुछ होगा तो, है ना। यस सर यस। ठीक है। सो अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट गाइस यहाँ पे जो काम चीज ध्यान रखने वाली चीज है ना, विच इज दिस वन, द बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, एनी आइडिया ऑन दिस वन की क्या हो सकता है ये, किसी ने एसएपी पे काम किया, राइट, कैन एबल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस क्वांटिटी। मिनिमम क्वांटिटी सर, मे नहीं, बी मिनिमम बेस क्वांटिटी। क्वांटिटी का मीनिंग होता है द क्वांटिटी बैच बैच जिसके लिए बैच की बॉम्ब बना मिनिमम रहे क्वांटिटी। हो। नहीं, अच्छा अगेन रॉन्ग, मैं बताता हूँ आपसे। बेस क्वांटिटी होता है कि आप बॉम्ब कितने का बना रहे हो। ओके, लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ इट अगेन। सपोज दिस मटेरियल 501, दिस आरआरएल समथिंग, कुछ भी जो भी मटेरियल है एफजी, ठीक है, इस एफजी की कितनी क्वांटिटी आपको बनानी है। सपोज यू वांट 1000 की आप बनानी है, तो 1000 क्वांटिटी बनाने के लिए हाउ मच कंपोनेंट ऑफ हाउ मच क्वांटिटी यू नीड। सपोज एक एक मिनट, एक काम करते हैं, चलो लेट्स ऐड सम कंपोनेंट हियर।
सपोज आपको ये 4 कंपोनेंट चाहिए। सो दिस इज स्टॉक आइटम, ये सारे स्टॉक आइटम होते हैं अपने, कि हम इसको स्टॉक करते हैं, रखते हैं अपने वेयर हाउस में। उसमें एक क्वांटिटी जो डाल रहा हूँ ना यहाँ पे मैं, अब हाउ मच क्वांटिटी आई नीड टू प्रोड्यूस दिस 1000 ऑफ दैट दिस मटेरियल। सो दिस इज वेयर वी डिफाइन कि वो बेस क्वांटिटी क्या मतलब होता है कि आपका बॉम्ब की जो बेस साइज है वो कितनी है। मतलब आपका जो मटेरियल है बॉम्ब में बना रहे, सपोज मेरे को 1000 FG के मटेरियल बनाने, राइट, 1000 पीसेस बनाने। तो 1000 पीस बनाने के लिए आपके रॉ मटेरियल आपको कितनी कितनी क्वांटिटी के चाहिए, दैट इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ बेस साइज, बेस क्वांटिटी। कि भाई 1000 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 100 kg इसका चाहिए, या 1000 पीस के चाहिए, 2000 पीस के चाहिए, ठीक है, 3320 इसके चाहिए, 450 के चाहिए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ बेस क्वांटिटी। अब इसमें भी अगर कोई SFG हो, सपोज राजू देखो जैसे मल्टीपल बॉम्ब का कैसे पता चलता है आपको, इसमें कोई SFG होगा ना, या इसका बॉम्ब होगा यस अपना खुद का, वो देखो यहाँ यस पे सर, ऑलरेडी टिकट दिख रहा है आपको, असेंबली। यस इसका सर, मतलब असेंबली का मतलब क्या होता है कि इसकी कोई और भी नीचे असेंबली है, मतलब और भी कुछ है ओ जो बन रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, ओके सर, ठीक है। तो इससे समझ में आता यस है असेंबली। तो ये क्या हुआ, जैसे देखो मैंने जैसे मटेरियल एंटर किया तो आप यहाँ पे टिक आ गया। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा ना, तो ये अपना एक अलग बॉम्ब ओपन करेगा, देगा अंदर। अभी बॉम्ब किसका होगा, देखो इस मटेरियल का ओपन हुआ, मेरा नहीं ओपन हुआ है, 501 का नहीं हुआ है, दिस इज ऑफ 555 मटेरियल। अब इस बॉम्ब के अंदर ओके देखो अपने 2 अलग मटेरियल और इसका कोई टिक नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे कोई और बॉम्ब नहीं बना हुआ है, कोई SFG नहीं है मतलब, और उसके नीचे ओनली 2, ये 2 है, कोई भी RR मटेरियल है, ये 2 कोई, देखिए एक वॉशर है करके, कोई RR कुछ है करके, ठीक है। तो ये हो गया इस का मटेरियल। फिर ओके इस SFG को हमने यूज किया है हमने FG के बॉम्ब में, ये हमारा FG मटेरियल हो गया। इस FG के बॉम्ब बना रहे हैं हम, ये इस बॉम्ब में हमने एक SFG हो गया हमारा, और बाकी 3 RR मटेरियल हो गए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दैट। ओके गाइस, यस इज सर। दिस क्लियर, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन टेल मी एनी लैंग्वेज इशू, एनीथिंग इज देयर। गिरिजा, राजेश, एनीवन? Nitesh ji, only one thing I want to ask is हाँ जी प्लीज। why we should define this quantity in bomb creation. Bomb is a one-to-one activity for making one item, one particular assembly. What should be the bomb structure? Why we are defining 1000 or 500 in that structure? I need to ओके understand that. सो दिस इज राजेश जी, डिपेंड्स एक्चुअली। सपोज अगर आपको चाहते हो, देखो इट्स डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस। इफ यू वांट कि आप एक असेंबली का आपको करना है यहाँ पे, कि एक पीस बनाने के लिए, इफ यू वांट टू डिफाइन हियर, ओके फॉर वन पीस you need one piece of RM, this one, like not for 1000, like let's go for anything. So I'm just telling you that we can give anything there based on that. Like suppose if some companies manufacture the bomb, like prepare a bomb structure for 1000 pieces, like for to manufacture 1000 I need this much raw materials of this much quantity. Some companies do it for one material, कि अच्छा एक मटेरियल का पीस बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए I'll be needing these many raw materials of this quantity. So it depends upon the customer and client and business. So maybe in your company you might have the bomb of one piece, कि मेरे को इस पर्टिकुलर 501 मटेरियल का FG का एक पीस बनाने के लिए how much raw material of how much quantity you require, that's how you create a bomb. So I can create that way also. Or if you say कि मेरे 100 पीस या 1000 पीस बनाने के लिए you need 1000 पीस और जो भी है, so it all depends upon that. Now what will happen, let me tell you one more thing on this part. Suppose now you receive an order from your customer of 5000 quantity, ठीक है, what will happen, सिस्टम इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा 5 से। व्हाई? बिकॉज वी रिसीव द ऑर्डर ऑफ 5000 नॉट ऑफ 1000, राइट। सिस्टम क्या करेगा, 1000 की, अब 1000 बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, अभी 1000 बनाने के लिए वी नीड नाउ फॉर टू मैन्युफैक्चर 1000 you need these 4 raw materials of this quantity. Understand it correctly, guys. To manufacture 1000 of this material 501, you need these 4 materials of 1000, 2000, 3000 and 4000, suppose, for example. This many you need for 1000 pieces. Now if you receive a customer order of 5000 quantity, what will happen is system will multiply everything by 5. Why? Because 1000 के लिए this many required, तो 5000 के लिए 1000 is equal 5 is equal to 5000, 2000 is equal to 10,000, 5000 5 into 3000 is equal to 15,000, 5 into 4 is equal to 20,000. So the quantity which will come in the order or requirement will be of this much, not this many quantity. That will be of 5000. यहाँ पे इस पर्टिकुलर 5000 होगा रिक्वायर्ड क्वांटिटी, इसके लिए 10,000, इसके लिए 15,000, इसके लिए 20,000. Getting my point?
Similar way, if you receive order of not 1000, if you receive order of 500 only, system will divide this, in two. Why? Because the base quantity is 1000 and you need to manufacture 500. So it will divide that by. So 1000 means iska ho jayega 500, 1000, 1500 and 2000 like this. I'll show you that. I'll definitely gonna show you that in system once we'll go to order. So base quantity is simple term कि आप ये देते हो just to make understand कि okay आपका जो bill of material है वो कितनी quantity के हिसाब से बना हुआ है. Getting my point? है सर, इसमें ऐसा ही है ना कि जैसे मान लीजिए मुझे 100 क्रेट मिल्क पैक करना है, 100 क्रेट. Right. हेलो, 100 हाँ जी, हाँ क्रेट जी, मिल्क पैक करना है. 1 crate quantity is 12 kg. So 12 into अगर मान लो 100 क्रेट है तो 1200 का बॉम्ब बनेगा. बेस क्वांटिटी विल बी 1200. और उसके Right. लिए जो पैकिंग मटेरियल लगेगा, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, दैट विल बी इन बॉम्ब फॉर 1200. Correct. Exactly. तो जब Right. भी मैं मान लीजिए मैं 5000 क्रेट बनाना चाहता हूँ, तो 1200 Right. का बेस लेके बनाएगा वो, राइट Correct. ना? Exactly. Yes. ओके, तो दैट मीन्स वो आपका बेस ऑटोमेटिक कैलकुलेशन क्वांटिटी. करता है कि 5000 कैरेट मींस 1200, वो उसको मल्टीप्लाई करेगा 1200 के हिसाब से, फिर बॉम्ब के कितने कंपोनेंट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेगा एंड दैट विल टेल यू कि दिस मच क्वांटिटी यू नीड, ऐसा. ओके 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 बट ओके वो करने के लिए यू नीड टू टेल सिस्टम सम अ बेस क्वांटिटी कि आपका बेस क्या है. सिस्टम को कुछ हमको आइडिया देना पड़ेगा भाई कि एक के लिए कितना है. भाई एक पीस बनाने के लिए इफ यू नीड 1 पीस, सो दैट इज 1-to-1 मैपिंग, राइट. भाई एक को बनाने के लिए अगर 2 पीस चाहिए होते तो इट इज 1-to-2 मैपिंग. सो नाउ अगर आपके 5 का ऑर्डर आता है आपको, तो सिस्टम क्या करेगा, उस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा कि भाई एक को बनाने के लिए 2 लग रहा है, तो 5 को बनाने के लिए कितना लगेगा, 10 पीस. सो सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बेस हम देते हैं. सो उसके लिए हम यहाँ पे बेस क्वांटिटी डालते हैं कि भाई मेरे को 1000 बनाने के लिए दिस मेनी कंपोनेंट्स आई नीड ऑफ दिस मच क्वांटिटी. नाउ जो भी कस्टमर का ऑर्डर आता है, नाउ बेस्ड ऑन दैट सिस्टम ऑटोमेटिक डज द मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन और एवरीथिंग बेस्ड ऑन द क्वांटिटी. ओके, अब समझ में आया राजेश जी एंड एवरीवन? Okay, Okay, understood. sir. But in our type of industry, what we are making is 1:1 for So making 1:1, one no? assembly. Perfect. Then ठीक है, that is also fine. One to while one is making also the production order, while making the production order, it will take care of number of components or assembly, whatever it is. okay. Right, got that. That's also very wonderful. So as I said, it's completely depend upon like you made it the logic like that. Okay, I need a mapping of 1-to-1 to make it simple for users to understand. Some companies Right. do it for 1000, some companies do it for 100, some companies do it for 10,000. It depends upon the like company to company. Right, So right. SAP Okay, has the understood. flexibility. Like, whatever you want to do, you can do that in simple. Okay. So yeah, this is how we create a bomb material. Again to repeat, CS01 is to create it. ये आप डेट आप चेंज कर सकते हो in the past and future. Generally we do it in past because you know this date matters. How does it matter? If you are making the bomb today, it means आज की डेट से आगे only you can do the transaction. Like in future only you can transaction. If you want to make something in the past, you cannot do that because this bomb is not valid from 21st of June. It is valid from 23rd of June. So in this such cases, sometimes users or customers or even anyone client, they create a bomb from starting of month, like suppose from 1st of January, from 1st of June, like that. So if you are right now, you are on 23rd June, they make it valid from 1st of June. So whenever you need something, system will not stop you to do anything, basically. That's, one of the trick. Otherwise, as I said, the prerequisite is material master must be there for FG as well as for components. And usage it will be for production. Okay. This is the definition of this. Then if you go to CS02, then same bomb you will change ke liye bhi again, you can come to the change mode of it. Like so you can create more than one bomb for a material. Let me tell you. So in bill of material, you can create more than one bomb, more than one bill of material for one same material. So for 501 right now, there are 3 bombs available, as you can see. Bomb number 1, bomb number 2, bomb number 3. So in bomb number 1, the base quantity is 100. So according to 100, they have designed. Second is we have defined, which is according to 1, and third is according to 1000. So you can, it all depends upon you. If you want 3 bombs, you can do. If you can 1, generally there is 1 bomb only we need. So system will not stop you if you need more than 1 bomb. Like suppose customer A ke liye, you need 5 raw materials
which they want. For customer B, you need 8 materials. Maybe the requirement for customer B is different. So you need some more raw material for that. So what you can do, you can create 2 bomb for customer A and for customer B. So when customer A order comes in, you can use custom bomb 1 for same material, and customer B order comes in, you can use bomb 2 for customer B. So for that, there is a flexibility. Okay. Next master we have is work center. So work center is basically, the machine. Like what is the machine we are using? What is the machine or a group of machine basically? Work center is basically, आप जो production में machines होती है, इसका हम work करते हैं. So in production, the most important basic thing is that what you need is एक तो हमें चाहिए bill of material. Why we need bill of material is just to make sure that okay, एक FG को बनाने के लिए how many raw materials we would require, okay, how many and what is the quantity of each. पहली चीज same for the packaging material. So how much raw material you will require, how much packaging material you will require, that all structure comes in the bill of material. First thing. That's why we need bill of material master. Second master is work center. Okay, work center basically means that the which machine or group of machine will be required. Like how many machines do you have in your company to manufacture, certain products? So उसके लिए हम machine का code open करते हैं. Like we create machines according to their capacity, according to their shift, कब operate होगी, कितनी, according to their capacity and all this stuff and all. So that's why we create a machine का master. And then we'll go in the next third master. There are 4 masters in that production planning. Other than the material master. Bill of material, work center, routing, and 4th is production version. So the sequence for that would be, first is bill of material, जो हमने create किया अभी. Second is work center. For routing, work center and bill of material is a prerequisite. मतलब वो दोनों create होने चाहिए, then only you can create routing. That's why I told you that first we need to create bill of material. Second, we need to create work center. Then these 2 will be assigned as a combination in routing, which I'll tell you when we'll go to routing. So as of now, let's go to, let's create a machine. So suppose, guys, give me any name of machine जो आपकी company में use करते हो. Any real time name. lathe Ajit machine, ji. CNC, VMC. Injection molding machine. Maybe CNC. Okay. तो CNC lathe या CNC machine आपने use की, ठीक है? Injection. तो मैं suppose नाम दे दिया CNC machine. But there is a catch here. While creating this machine code, you can give, only 8-digit character here. मतलब जो technical name है of the machine, to understand that which machine is this, you can give only 8-digit. Like, so what you can do, you maybe suppose CNC capacity is 1000 or something, जो भी like something. But you can do CNC 1000. या CNC 1, जैसे आपके पास CNC की 10 machine है, तो you can give like CNC 1, CNC 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ऐसा. That also you can do. So that won't depend on you which logic you want to use. So one is this. Third is the works category. Like, what is this? Is this a machine? Is this a labor? Or is this something else? A production line. Production line का मतलब पता है ना? जो conveyor belt वगैरह होता है, production line चलती है proper एक. इस line पे बहुत सारी machines पे assemble है, तो we can create a line as well as a group of machine. So generally we use machine as a category कि हम machine का code open कर रहे हैं. So once we use machine, we give our machine name and plant. Okay, so enter. So हम जाते हो, this is how it comes. तो यहाँ पे आप मशीन का पूरा नाम दे सकते हो कि दिस इज CNC lathe या जो भी है, CNC lathe 1000 टन ऐसा करके भैया 1000 टन की है. दिस इज CNC lathe मशीन है, और CNC lathe में भी दिस इज वन फर्स्ट मशीन है CNC lathe ऐसा. इस CNC lathe 1 of 1000 टन. इस तरह से आप एक डेफिनेशन दे सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए. दिस इज CNC lathe फर्स्ट मशीन है, इसकी कैपेसिटी इज 1000 टन या 100 टन और समथिंग अनदर, जो भी आपको real time में रहता है. Just an example I'm telling you. Okay, this is how we can give the description here. This is the technical term. This is the description of that. Then comes the category जो machine की automatic by default हम डाल दी थी. यहाँ पे भी देखो ये आता है नाम. That who is the responsible person who takes care of the machines. Similar way we have production supervisor in the metal master. We have everywhere we have planner. In MRP we have MRP controller. वो जो MRP का take care करता है, जो planning का take care करता है. Similar way production का take care करता है, उसका production supervisor है. मशीन की टेक केयर करेगा वो प्रोडक्शन के लिए, मशीन का रिस्पांसिबल पर्सन है वो है. तो अगेन सेम सिमिलर वे, दीज आर जस्ट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस एंड द ऑडिटिंग पर्पस कि आप कौन बंदा क्या था, ट्रैकिंग पर्पस वगैरह की होती है चीजें. जो रामू है, शिवा है, अभिषेक है, और ग्रुप हो गया, कुछ भी हो सकता है, वर्क सुपरवाइजर. सो यू कैन क्रिएट दीज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, एनी नेम, एनी ग्रुप, एनीथिंग. Suppose Shiva is the one who is taking care of this machine, maybe suppose CNC 1. So Shiva, then we need the uses. So one is this field important, second is uses. Like, where will you use this machine?
Generally, we give 009, which is all. We can use it anywhere. Generally, we give it 009 only. We don't give anything else. Okay? Because machine is free to use anywhere. Yeah. अब आप पे डिपेंड करता है आप उसको कहाँ यूज करो, प्रोडक्शन में कर रहे हो या मेंटेनेंस के लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो. ठीक है. So that's why we give it a 009. Second, third is this is important. सर These two सॉरी, points are important. जी. यूसेज समझा नहीं सर. Uses, अच्छा, बॉम्ब के अंदर यूसेस क्या समझ में आया आपको? कहाँ पे यूज करना है वो? एग्जैक्टली, सिंपल था मैं भाई. यूसेस का मतलब होता है कहाँ यूज कर रहे हो. सो यूसेस का मतलब लेकिन हो गया आप, कि इस मशीन को कहाँ यूज करोगे. तो मैंने क्या बोला इसको कि आई एम नॉट हर गेटिंग जगह सर. यूज कर सकते हैं, ऑल एवरीवेयर. वर्क सेंटर मतलब सर जैसा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने जैसे राउटिंग होती है, एक एक सेंटर मतलब हर एक मशीन एक वर्क सेंटर रहता है. वर्क सेंटर इज बेसिकली मशीन भाई. यस सर, मशीन. ठीक है. लेकिन उसको, हाँ एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे क्या सर? हाँ जी, हाँ जी. क्या मतलब बताओ ना, क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूजन क्या है. वही समझ नहीं आया. यूसेज. मशीन क्या समझ में नहीं है ऐसा. नहीं नहीं, अब जैसा अपन वर्क सेंटर बना है सर, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक मतलब हर एक मशीन का वर्क सेंटर रहता है ना, हर एक प्रोडक्ट का. हाँ हाँ, तो बड़ी वही तो क्रिएट कर रहे हैं ना. एक बार रिपीट करते क्या सर, ताकि मैं थोड़ा समझ सकूं. ओके. ओके. भाई सिंपल है. आपकी कंपनी में यू हैव 10 सीएनसी मशीन. ठीक है. यस यस. सो अब 10 सीएनसी मशीन है, तो आप अब 10 मशीन का कोड आपके पास होना चाहिए ना, कि हर एक जी मशीन की क्या कैपेसिटी है, क्या उसका यूसेज है, कौन जी बंदा है जो उसका टेक केयर करता है, हर एक मशीन पे मैं जी क्या क्या एक्टिविटी कर सकता हूँ. एक्टिविटी जी उसका सेटअप करने का टाइमिंग क्या है मेरा, उसको मशीन चलाने का टाइमिंग क्या है, उस पर कितनी लेबर क्या कंज्यूम होगी, उसका पावर कंजप्शन क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका शिफ्ट क्या यूज होगा, मतलब कौन सी शिफ्ट में रन करता हूँ मैं, शिफ्ट ए में, शिफ्ट बी में, या ऑल शिफ्ट में 24/7 है, कैसे है. सो ऑल दीज थिंग्स वी असाइन इन दिस मास्टर विद रिस्पेक्ट टू मशीन. जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्क सेंटर का या इस मशीन का क्या कैपेसिटी है, क्या शिफ्ट यूसेज टाइम क्या है, मतलब कहाँ यूज करेंगे एंड कितने टाइम के लिए यूज करेंगे. ठीक है. और विच एक्टिविटी वी ओ, कैन रिकॉर्ड ऑन दैट, एंड हु इज द ओके सर. पर्सन हु विल टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कौन बंदा है जिसको हम पकड़ेंगे भाई, कि अगर कुछ इश्यू हुआ इस मशीन में, तो तू हु इज दैट वन जिसको हम बात करेंगे भाई कि यार शिवा यार इस मशीन में दिक्कत है, ये तो ब्रेकडाउन हो गया इसमें कुछ, तो इसको कुछ सॉल्व करो, कुछ करो, हमारा प्रोडक्शन रुका हुआ है. सो ऑल दीज थिंग्स वी असाइन एज एन मास्टर इन दिस मशीन, इन मास्टर. क्लियर है. गेटिंग सर. Sir, गुड. work center category can be for a complete line as well, right? Yes, right. That's what I'm telling you. This 007 is for line. Okay. As you can see, सिंगल लेबर के लिए, अगर आप लेबर को ऐसा बना रहे हो कि आप एज ए लेबर एक मशीन को क्रिएट कर रहे हो, कि मैं एक लेबर है कोई, तो लेबर के लिए भी आप एक मास्टर क्रिएट कर सकते हो. मशीन के लिए तो है ही अलग ऑप्शन. और एक लाइन, हम जनरली 3 यूज करते हैं, मशीन लाइन, मशीन लेबर और प्रोडक्शन लाइन. सो मोस्टली मशीन यूज होता है और लाइन यूज होता है, लेबर भी नहीं होता है. ठीक है. Okay, got that, sir. एंड 009 का बेसिकली सिंपल सा मीनिंग है, देखो 0 मींस दैट यू कैन यूज इट एनीवेयर. मतलब देखो देखो एक एग्जांपल डिफरेंशिएट करता हूं मैं. चलो, if you use 004 suppose for example, you can use this only in maintenance. means कि जो भी प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है आपकी कंपनी में ना, that particular department has separate machine base who takes care of the maintenance things. Okay, if something happens then this is my machine on which I'll do the maintenance of some parts and all. So is this a maintenance stable machine or a simple machine, or maybe a kind of machine that you can use anywhere, like a common machine which can be used in maintenance department, which can be used in production, which can be used in anywhere else as well. So in general, we give it all. Okay, because machines are generally can be used anywhere. It all depends upon कि आप कहाँ use कर रहे हो उसको, और क्या पर्पज है आपका, और क्या किसकी कैपेसिटी है, क्या लेंथ, क्या उसकी बैंडविड्थ है. So that's why generally we give 009 here. ठीक है. Next comes in important is this key. This key is really very important. This one. ये इस की से क्या होता है, इस की में ना देखो, बेस्ड ऑन आवर प्रोडक्शन कि हम, ओके, दिस की बेसिकली डिफाइंस कि हम क्या क्या एक्टिविटी मशीन पे कर रहे हैं. एक्टिविटी मींस सेटअप के लिए जो हमारा टाइम लगेगा मशीन पे, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू सेटअप, व्हाट इज द मशीन रनिंग आवर्स इट विल टेक, हाउ मच टाइम मशीन रन करेगी तो उसका क्या टाइमिंग रिकॉर्ड होगा, कैसे होगा, उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी, कैसे आएगी, कहाँ जाएगी, वो सब के लिए कौन सी एक्टिविटी मशीन एक्टिविटी हम रन करते हैं, उस पर लेबर कितनी यूज होगी, क्या असाइन होगी, कितना काम करेगी,
तो लेबर का जो कॉस्ट आएगा क्या आएगा वो भी हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन के, देखो ये क्या होता है गाइस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्ट कॉस्टिंग, कि अब आपका जो एफजी बन रहा है, कंपनी क्या करती है, उसको सेल करने से पहले उसकी कॉस्टिंग देखती है, उसमें एक्सपेंसेस कितने आए। सो टू मैन्युफैक्चर दैट एफजी, व्हाट इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट एफजी? To calculate all these things, we need a detailed level of planning of expenses, कि कहाँ पे कितना कितना हमने क्या क्या कंज्यूम किया है, यूज किया है, और उसका कितना कितना एक्सपेंस हुआ है। to sum up that everything, that will be the total expense, total cost of that thing, and the end, उस कॉस्ट के ऊपर कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन, डिस्काउंट एंड चीजें ऐड करती है बेस्ड ऑन द कस्टमर टू कस्टमर, एंड दे सेल इन द मार्केट। अब सपोज, let me tell you a real example. So in pharma, the manufacturing cost of the tablet is only 1 or 2 rupees for a complete strip. I'm telling you in general, like for a basic, not for all. Suppose any of the example आप ले लो, 1 या 2 रुपए आपकी कॉस्ट आती है just to manufacture 10 tablets. Okay? अब उसका जो उसके ऊपर MRP जो लिखी जाती है, selling price, that is 40 rupees, 50 rupees, 500 रुपए, 1000 रुपए, डिपेंड्स कि कितनी ज्यादा डिमांड है उसकी मार्केट में और कितनी सीवियर कंडीशन को रिपेयर कर रही है वो। सो उन चीजों, अब इसका मतलब ये तो नहीं माना कि उसकी 1000 रुपए लिखा है मतलब उसकी 500, 1000 लिखा है मतलब उसकी 900 रुपए उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी और 100 रुपए उसका मार्जिन होगा, नहीं, इट ऑल डिपेंड्स। सो 1-2 रुपए उसके अगर मार्जिन है, लेकिन बीच में जो कस्टमर का जो बेस है, लाइक जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो बहुत ज्यादा है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है वो आ रही 2 रुपए, फिर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, दे कीप देयर मार्जिन और दे व्हाट दे सेल इज इन 10 रुपीज। सो 8 रुपए उनका एक मार्जिन हो गया, 2 रुपए उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, 10 रुपए में वो सेल करते हैं। लेकिन अब 10 रुपए के बाद सपोज एक बहुत बड़ा होलसेल बंदे ने, कंपनी ने, किसी ने खरीदा मालूम पूरा बहुत सारा थोक में, ठीक है, खरीद लिया, खरीदने के बाद अब वो आगे छोटे मोटे रिटेलर्स को डिवाइड करता है, रिटेलर्स फिर आगे छोटे मोटे मेडिकल स्टोर को डिवाइड करते हैं, मेडिकल स्टोर वाला अपना कमीशन रखते हैं फिर, और आगे फिर कस्टमर को देते हैं। तो ऐसे करते करते देयर इज अ बिग चेन इन बिटवीन ऑफ सप्लाई चेन, ठीक है। So that's why the margin, a big margin is there in the pharmaceutical industries, in the tablets and all. Okay, the manufacturing cost is very low. That's why in Rajasthan and in many states, the tablets are very much minimal cost. मतलब 5 रुपए 10 रुपए की स्लिप काटते हैं आपकी in government hospitals, and they give you almost for free tablets and all, because you know that there is a very minimal cost they have. और जो भी है छोटा मोटा वो जो पैसा आ रहा है उससे चला जाता है, बाकी गवर्नमेंट पे देम द कंपनीज। That's why this is how it happens. Okay. So in this, basically, we can record the activities, and maximum activities we can record for a machine is 6. मतलब यहाँ पे हमने 4 रिकॉर्ड किए, 1 2 3 4, which is setup, machine, power consumption. There are 2 more I can do if I want. More than 6 activities I cannot record in a machine or in a line. So generally we don't need more than 6, because generally we setup is the one thing we need. Machine kitni chali है that we need. Labor time or labor consumption we need. Power consumption we need. That's just the major thing. These are the only 4 activities we might need. There are very rare where we need more than 6 or more than 4. Okay, so there can be 2 more activities we can add and we can record. Otherwise, we cannot do more than 6 at a time for one machine. ठीक है. Next is default value. यहाँ पे हम क्या करते हैं, because सबसे important काम आती है, तो यहाँ पे कंट्रोल की आती है। कंट्रोल की का मतलब होता है कि क्या क्या एक्टिविटीज ऑटोमेटिक बैकएंड में हो जाएगी। ठीक है, सपोज इफ आई एंटर फॉर अ प्रोडक्शन PP01 नॉर्मल प्रोडक्शन, इफ आई एंटर, चलो इसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज ऑटोमेटिक हो रही है, PP01 डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। सो देखो ये टिक्स आ रहे हैं। सो दीज टिक मींस दैट दीज आर द एक्टिविटीज, इफ आई असाइन दिस की PP01 इन दिस वर्क सेंटर और इन अ राउटिंग में असाइन होती है, सो दीज एक्टिविटी विल हैपन ऑटोमेटिकली इन बैकएंड, मींस द शेड्यूलिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली, costing will be calculated automatically, printing will happen automatically. What is the meaning of that? Costing means, costing का मतलब क्या हुआ, ये सेटअप कॉस्ट, भाई सेटअप को अगर मेरे को 1 घंटा लगा, मशीन चलने को 2 घंटे लगे, तो ये प्रोडक्ट को बनने में 2 घंटे मशीन चलने में लगे, लेबर कितनी लेबर यूज हुई मेरी, सपोज 2 लेबर यूज हुई, ये लेबर को भी आर में करा मैं, तो 1 लेबर की कॉस्ट होती है 1 दिन में 8 घंटे काम करता है सपोज, ठीक है, 2 लेबर यूज हुए हमारा 16 घंटे, पूरे दिन में यहाँ 16 घंटे गए हमारे, 16 घंटे की लेबर की जो कॉस्ट होगी वो हम चाहते हैं कैलकुलेट हो और वो प्रोडक्शन कॉस्टिंग में जाए। एंड पावर कंजम्पशन मतलब कितने वोल्ट हुए, और अब वोल्ट के हिसाब से मतलब 1 वोल्ट 1 यूनिट की कितना पैसा है, सपोज 10 रुपए, तो अगर 10 हुआ है तो मतलब 100 रुपए, 100 रुपए पावर कंजम्पशन की कॉस्ट आई मशीन को चलाने के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स वी वांट सिस्टम टू कैलकुलेट, सो दैट्स व्हाई द कॉस्टिंग इज हैपन। तो अभी इफ यू डू दिस ट्रिक्स एंड ऑल नो, बैकएंड में सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स इन बैकएंड, दैट्स व्हाई दिस की इज इंपॉर्टेंट। So these are default settings from SAP. No, these are the configuration setting. We can, these are the default only.
These things you can see here, these are default only, but No, we can like customize when we that according select, to only. like when जैसे we ये जो है select ना G वाला, PP01. Yeah. हाँ जी, हाँ जी, So हाँ जी, I'm बोलो saying बोलो. like if we select PP01, then Okay, the detailed information and the boxes which are already ticked, those are default settings from SAP or we have SAP, configured. Yeah, SAP, SAP. SAP. Okay, okay, got Second, that. first is this one. Second, say suppose you don't want these tricks, you want more than like more some more things, or maybe you want this trick not to be there, or anything. So you want to do any customization in that, you can create your own key as well with the G. Look, this जो ये जो key बनी हुई है ना ZP02, ये customized है. तो इसके लिए अगर हम देखते हैं क्या सेटिंग है, इन्फॉर्मेशन देखते हैं. देखो इसके लिए ये टिक नहीं है, इसमें ये एक्स्ट्रा टिक आ गया एक, इसमें ये खाली है. तो ये we can customize according to our need in customizing. So we can create our own key as well in configuration. Okay. Right, and the name of that our configuration will be own key will be ZP02 only, right? No. It all depends. It start from Z. Okay. Okay, okay. Further thing you For can the give letter, okay, we can you select can it. use that, but it should start from G because in SAP has given this letter free to us. But if you want to do any customization in SAP ने बोला है आपको कि आप you use the letter Z. इस लेटर को उसने SAP ने फ्री दिया, मतलब SAP ने कहीं भी Z यूज नहीं किया है स्टार्टिंग में. SAP ने PLY ABCD के सारे लेटर यूज किए लेकिन Z यूज नहीं किया. कि Z को उन्होंने की रखा है कि अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना हो इन केस ऑफ समथिंग और अदर, सो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की वजह से, so use G so that it will be easy for identification that okay, this is customized, not standard. This is not default given by SAP. This is something which user has done. You has done or me has done. Any one of us have done. Got my point? Hello? Yeah, right, right. Okay, Got good. it. So ये हो गया. Then यहाँ पे हम डालते हैं कि अच्छा, how do we want to measure these things? Like setup you want to measure in hour, minutes, or like how? So here there's a flexibility we have. Suppose if you have only very little manufacturing time, so you can measure in minutes, in like weeks, years, seconds, even seconds also, picoseconds as well, nanoseconds as well, milliseconds, months, microseconds, minutes, hours, days. So all the possible options are already given. You can use any one of them as per your requirement. Like if in very little time you need your for production, so you can give you need 10 minutes to set up a machine. You need 1 hour, like so minute for setup, hour for machine, like 10 minutes to set up, 1 hour. 1 hour is for machine running, labor maybe again in hour, 6 hour, 8 hour something, power consumption is in volt or something. So look, इसके लिए देखो ऑटोमेटिक अलग सेक्शन आया अलग. इसके केस में देखो कोई भी आर डे मंथ यूज नहीं आया, राइट? ऑटोमेटिक इट केम डिफरेंट. तो इसके लिए क्या है, देखो जूल आया है, किलोवाट आया है, मेगा जूल, मिली जूल, टर्म्स अलग अलग आए हैं, मेगावाट पर आवर. जनरली वी यूज किलोवाट पर आवर और किलोवाट पर आवर, kWh, राइट, फॉर पावर कंजप्शन. सो वी असाइन दीस थिंग्स. सो इससे क्या होता है, ये होती है हमारी बेसिकली जो फिजिक्स के रूल नहीं होते, दैट वी हैव स्टडीड फिजिक्स वेयर वी हैव डायमेंशंस एंड ऑल, कि फॉर फिजिक्स दैट वी हैव power consumption would be in kilowatt per hour, machine and setup will be in hours, minutes and all these things. So these we have dimensions in SAP in backend जो यहाँ पे डिफाइन होता है कि भाई पावर मतलब होता है कि या तो किलोवाट में या फिर आर में या जूल में, सब में आएगी. सो बेस्ड ऑन दैट सिस्टम ऑटोमेटिक गिव्स दीस थिंग्स इन बैकएंड फ्रॉम बैकएंड. ओके, सो वी कैन यूज दैट. सो इसका मतलब क्या हुआ, आप जब भी हम मेजर करेंगे ना एक्टिविटी की, इस मशीन को जब भी हम यूज करेंगे, सो वी विल रिकॉर्ड द टाइम इन दीस यूनिट ऑफ मेजर. कि जब भी हम इसका सेटअप टाइम मेजर करेंगे दैट विल बी इन मिनट्स. जब इसकी मशीन रनिंग आवर्स मेजर करेंगे आर, लेबर विल बी इन आर, पावर कंजप्शन विल बी इन किलोवाट पर आवर, कि कितने किलोवाट यूज किया मशीन ने आज चलाने में. ऐसा गॉट दैट. नेक्स्ट इज कैपेसिटी. कैपेसिटी इज इंपॉर्टेंट. अगेन कैपेसिटी इज लाइक यहाँ पे मशीन हम डिफाइन करते हैं कि मशीन हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन ओनली. मशीन, दिस जनरली वी यूज मशीन ओनली, और पर्सन लेबर के लिए पर्सन यूज करते हैं. सो ये क्लिक करके जैसे फिर प्रेस एंटर, सिस्टम आपको अलग स्क्रीन पे लेके जाता है. ठीक है, इस सिस्टम में क्या है कि इस मशीन की यू आर डिफाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ दिस मशीन हियर. ओके, इफ यू वांट टू गिव सम डेफिनेशन हियर यू कैन गिव इन सेम, you can give maybe same here, or if you want something else you can give here. Then we give same here only. Then the capacity response, like for the capacity, who is the person responsible for machine? Isn't Siva responsible, but who is that person responsible who is taking care of capacity of the machines? कि कौन सी मशीन की कितनी कैपेसिटी है, क्या है, नहीं है,
or maybe you can give same name or you can give different name. It all depends upon your company. So maybe Rajesh is the person who is giving technique of the capacity. Then we have the capacity based unit measure. Like in capacity, you will measure in watt unit. So generally we measure capacity in hours. Out of 24 hours, how much our machine का running time क्या है, कितने घंटे चली, कितना break time है, क्या है वो सब चीजें. तो generally suppose start time is from 00 to 24 hours. मतलब हमारी मशीन अपनी 24 घंटे चलती है. Like there is no break time for the machine. There is nothing. System क्या करेगा? System will understand this in 24 hour capacity. देखो system automatic calculate कर लिया. अब समझना, वापस बताता हूँ. 0 means starting from night 12 to 0 to 24 मतलब 24 घंटे पूरे यूज हो रहे सिस्टम पे, कोई ब्रेक नहीं है. बट इफ आई वांट टू, लाइक सपोज मैंने यहाँ 24 घंटे दे दी, लेकिन मेरे को पता है कि 1 घंटा में सिस्टम का ब्रेक टाइम है. When my labor go to something or other, but maybe to cool down the machine, I do not operate machine for 1 hour. So what if I do 1 year? देखो जैसे मैंने यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक 23 हो गया, यहाँ पे 23 हो गया, दिख रहा है. अगर मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ, देखना यहाँ 5 डाल रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक यहाँ माइनस कर देगा ये 5. So based on these data, system automatically does the plus minus and all these things. System is smart enough. It will enter 0 here, it will take 24 hours total. ठीक है, तो एक तो हो गया ये. दूसरा ये तो हो गया देखो स्टार्ट एंड एंड टाइम, कि पूरे दिन के अंदर एक दिन में मशीन की कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी, उसमें ब्रेक टाइम क्या है उसका, पहली चीज. सेकंड इज दिस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब आप दिन में भी इज योर मशीन अवेलेबल 100% टू यू, और मशीन की मतलब इतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं है, आई कैन यूज ओनली 80% ऑफ दैट. मतलब इसी दिस इज फॉर प्रोडक्टिविटी, efficiency of machine. So if you do 80%, you guys see the difference. Like so again, let me change this to 0. Let me do it 100. So अभी क्या है 100 taking 24 hours. अब मैं इसको अगर यहाँ नहीं करके 75 कर, look the difference here. Okay, enter. 18 आ गया automatic. Why? Because machine can run 24 hours only, but the productivity, the capacity I can utilize of this machine is on 75% only. So that is why the main operating time of that machine will be 18 hours only. The capacity utilization will be 18 hours only. Because it's still, the machine will run 24 hours only, but still I will not get the output equivalent to 24 hours because of the capacity. That's why if you do it 50%, it will reduce to 12 hours. If you do it 100%, it will come to 24 hours. So you can define that machine to machine individually. किस मशीन की कितनी कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी का डिपार्टमेंट है बंदा होता है कंपनी में, वो दैट टेक केयर ऑफ दिस पार्ट. तो कोई भी देखो इन फिजिकली प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल कि कोई भी मशीन की आप यूटिलाइजेशन 100% कर सकते हो. यू कैन नॉट डू दैट. You utilize at most 80% you can utilize that. So based on that only we can create the master, and based on that only we can give the planning. So this is that. ये जो चीज होती है ना, देखो ये होता है कि अगर आपको मशीन को ग्रुपिंग करनी है, लाइक सपोज एज आई टोल्ड यू कि आपको अगर मशीन का सीएनसी मशीन आपको 10 बनानी है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं 10 मास्टर नहीं बना के, इफ यू डोंट वांट टू क्रिएट 10 डिफरेंट मास्टर for CNC 1, 2, 3, 4, 5. You want to create one CNC machine, one machine only for that. And you want कि उस एक मशीन की कोड में, मास्टर में आपकी 10 मशीन के इक्विवेलेंट की कैपेसिटी हो, मतलब वो काउंट करे. So if you do it here 10, guys see the difference, okay? Number of individual capacity, मतलब एक की कैपेसिटी अगर 24 hour है, so if you create a group of machine here for one code only for group of machine, so देखो यहाँ 24 है ना, अब देखना क्या हुआ, 240 is the capacity. Operating time will be 24 hours only. मतलब एक दिन में machine can run 24 hours only, but the capacity of machine in 24 hours is 240 hours. Why? Because this is not one machine. Same kind of machine can run at the same time in 24 hours 10 machine in parallel. It means एक machine की अगर capacity 24 hours है, 10 machine की कितनी होगी 240 hours. That's why system ने automatic यहाँ पे जो मैंने डाला उसके according system ने automatic multiplication कर दिया. So 5 means 120 hours, or 1 means only 24 hours. Like that. So you can create a single machine code and a group of machine code in also in that. So work center group and a single machine group, that also you can create. Okay. I hope this was understandable. समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? Yes, sir. तो ये होगी इसकी कैपेसिटी. Then the most important part is the costing. Costing क्या होता है? देखो यहाँ पे आते हैं इसकी costing का, कि भाई आप जो भी चीज बना रहे हो, इसकी जो कॉस्ट है वो कहाँ जाएगी, where will the cost will go to that. Okay, फाइनेंस वाला का काम है, कॉस्टिंग वाला का काम है, तो इसके लिए कॉस्ट सेंटर बनता है, और सेंटर में इसकी कॉस्ट कहाँ पे एलोकेट होगी जाके, और उसमें ये चीज होती है वो मैंडेटरी होनी है. ये क्या होता है कि आप सुनो, जो हमने वहाँ डिफाइन किया, ये डिफाइन किया ना हमने सेटअप लेबर मशीन, वो सबसे फर्स्ट इस वाले टेब में. तो ये क्या चीज इसके आगे के अकॉर्डिंग
कि भाई इसका उसके लिए ये चीज बेसिकली रेट के लिए कि सपोज 1 घंटे सेटअप के लिए फॉर 1 hour ऑफ सेटअप हाउ मच कॉस्ट जनरली इट इनकर्स। आपने कैलकुलेट किया होगा कि भाई 1 घंटा अगर मैं सेटअप में लगता है तो जनरली मेरे को 100 रुपये की कॉस्ट आती है। मतलब आप एक ये जो आपका कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होता है ना, वो आपको वैल्यू बताता है। तो दैट यू नीड टू एंटर इन हियर कि फॉर 1 hour जनरली टेक्स 100 रुपीज। सो व्हाट वी डू, वी इन जो कॉस्टिंग वाले बंदे होते हैं देयर इज डिफरेंट मास्टर। ये अपना मास्टर नहीं है, अपने को कुछ नहीं करना होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है, हमें कॉस्टिंग का एक मास्टर होता है एक्टिविटी टाइप करके, वहां पे वो डिफाइन करते हैं कि 1 hour ऑफ सेटअप टाइम इज इक्वल टू 100 रुपीज, 1 hour of machine running time is equal to 1000 rupees, 1 hour of labor time is equal to 500 rupees, 1 hour of power consumption और 1 unit of power consumption is equal to 10 rupees। तो सीधी सी बात है, 1 यूनिट का मतलब 10 रुपीज हो गया। तो इफ यू विल गिव 10 यूनिट्स इट मींस 10 into 10 is equal to 100 रुपए। पावर कंजप्शन कितने रुपए का हुआ, 100 रुपए का। तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 100 रुपए की मेरी कॉस्ट आई पावर में, 1000 रुपए गई मेरी मशीन रनिंग में, 500 रुपए गई मेरी लेबर में। तो इन सबको सम कर दूंगा मैं, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि मेरे को इस मशीन पे इतनी कॉस्ट गई है। फिर आएगी साथ में एक तो होगी मशीन की, फिर आती है मेरी इसकी मेरे मटेरियल कितने कंज्यूम हुए। तो बेस्ड ऑन माय क्वांटिटी आई कैलकुलेट द मटेरियल कंपोनेंट की प्राइस भी। तो कंपोनेंट ए मेरा अगर 10 kg यूज हुआ तो 1 kg की रुपीज अगर सुपर 10 रुपए है तो 10 kg कितनी होगी, 100 रुपए। तो ऐसे करते करते वी कैलकुलेट ऑल दिस कॉस्ट, सिस्टम बैकएंड में सब कैलकुलेट करता है चीजें, ठीक है। और वो सम करके दिखाता है कि अच्छा एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे को 10 रुपए की कॉस्ट आई है, सो माई मार्जिन ऑन दैट वुड बी 5 रुपीज, सो द सेलिंग प्राइस वुड बी 15 लाइक दैट। तो इस तरह से सिस्टम कैलकुलेट करता है और कॉस्ट करके दिखाता है और सेल करता है मार्केट में, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस। समझ में आया गाइस? हेलो Yeah, but Yes. hello. हाँ जी, Actually, one thing I need to understand. Basically, the finance data that is also they are deriving from SAP only. yeah, so from Rate SAP and all only it those comes, things. no? Man hour, machine hour, or what power consumption. Initially, how they will calculate that? That will be based on some input data will be there. No? Yes, yes, let me tell you. Very good question. Very good question you asked. Let me tell you that. So basically, okay. For that, there's a formula. Oh, sorry, I forgot to tell that. Okay, yes, sorry, this one I forgot to. I'm really sorry. Yeah, so these are the formula for that actually. So how, system in SAP, this is the formula to calculate. Similar way, physically, like before SAP only, the costing or finance department calculate on Excel and everything. They have, Excel and everything and is there for them to calculate these things. Basically, for 1 hour of setup, how much cost they, they generally incurs, or for a setup machine running hours of 1 hour, how much cost generally it incurs. So all these things they do in Excel sheet, other than SAP. But in SAP, we have formula for that. एक जो क्लाइंट आपको बोलता है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाले आपको बोलते हैं दैट ओके द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मशीन टाइम। और देखो ओके जनरली लेट मी टेल यू वन थिंग। तो सेटअप टाइम के लिए क्या होता है ना, सेटअप टाइम इज ऑलवेज फिक्स। सेटअप टाइम नेवर चेंजेस बेस्ड ऑन द ऑर्डर क्वांटिटी। एक मशीन को आपको अगर उस पर 1000 पीसेस बनाने हैं, द सेटअप टाइम वुड रिमेन 10 मिनट्स। इफ you want to produce 1 lakh pieces, still to set up the machine it will take 10 minutes only, it will not take more than that, right? Guys agree with me? तो एक मशीन को आपको सेटअप करना है तो उसके लिए 10 मिनट ही लगने हैं ना, इट विल नॉट चेंज द टाइम एज पर द क्वांटिटी। Yeah, setup time will remain same. सेटअप टाइम विल सेम, ऑलवेज रिमेन सेम, राइट? भाई आपको मशीन को ऑन करने के लिए यू नीड 5, लाइक सपोज प्लग इन करना है, यू नीड टू क्लीन अप, वो जो भी पार्ट, जो व्हाट आर द फर्स्ट फ्यू एक्टिविटीज यू डू टू सेट अप द मशीन, दैट विल टेक सेम टाइम। आप क्वांटिटी से कुछ भी हो, irrespective of quantity it happens. That's why there is no formula for setup. So setup के लिए the cost would always remain same. 10 minutes मतलब 10 minutes. So if you define 10 minutes is equal to 100 rupees, so setup cost would always remain same in case of any order quantity. So it will always come as 100 only. But for machine it varies. So to manufacture 1000 pieces, you need 2 hours of machine running hours. So 2 into 100 is equal to 200 rupees is the cost. But if you need 10 hours of machine to manufacture 1 lakh pieces, so you'll give 10 hours. So 10 into 10 is equal to 1000 rupees. Yeah, 100 is equal to 1000 rupees. So based on that, it varies. So these formulas, it varies, and this calculate these things automatically in backend. And ये जो assignment होता है यहाँ पे,
So what happens is basically we get one value like this actually from costing department, and this value in this is accurate type, costing people or finance people at this cost. कि 1 hour is equal to or 1 minute is equal to this many rupees, 1 hour is equal to this many rupees, or 1 kWh 1 kilowatt per hour is equal to or 1 minute is equal to 10 rupees ऐसा. So वो हम इसके इंडिविजुअली असाइन लिंक करते हैं उसको कि सेटअप के लिए मिनट में हो रहा है तो 1 minute इक्वल टू 1 rupees. So 10 minutes इक्वल टू 10 rupees. Similar way for 1 hour machine, 1 hour machine cost is 100 rupees. So आप अगर आप 5 घंटे डालोगे तो 5 into that 10 rupees equal to 500 rupees or 50 rupees जो भी है. So that's how it happens. Similar way, this is being calculated based on the formulas. So this formula is basically, let me tell you how it is. Let me show you actually, not tell you. Where is the formula and how do we enter that? एक्चुअली ये एजिट के टाइम में बनाते हैं ना सर? हाँ तो बेसिकली हाँ एग्जैक्टली जब हम किसी क्लाइंट में पहली Edit- बार जाते हैं उनको पूछते हैं ना तो उस टाइम हम बेसिकली उनको पूछते हैं कि अच्छा हाउ डू यू वांट टू कैलकुलेट एक्टिविटीज, क्या फॉर्मूला आप यूज करते हो, हाउ डू यू वांट टू यूज दैट ऑल दीस थिंग्स. सो हम उसको पूछते हैं और वो फॉर्मूला वन टाइम सेटअप होता है. दैट्स इट. बेसिकली वन टाइम सेटअप होता है ये सब चीजें. लेकिन इसमें आगे आगे जाके हमें कोई चेंजेस करना है तो कर सकते हैं. यस यस वी मान कैन डू लीजिए दैट. मशीन Yes, yes, प्रिपरेशन yes, का yes. टाइम में हमने एफिशिएंसी या वी कैन चेंज बडी. कॉस्टिंग में ये वर्क्स एंड फॉर्मूलास, ये फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन होता है. यही चीजें यहाँ पे यही असाइन किया हुआ हमने 1 2 3. तो यहाँ पे हम वो डिफाइन करते हैं फॉर्मूला. सपोज ये मशीन टाइम का फॉर्मूला मेरा, दिस इज द फॉर्मूला प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन. सो ये क्या है, अब लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस. 54. So these are the parameter for that. Parameter means देखो यहाँ पे हम डायमेंशन डिफाइन करते हैं. वो डायमेंशन जो आई थी ना वहाँ पे देखो, ये एनर्जी, डेंसिटी, कंडक्टिविटी, एक्सेलरेशन, ये फिजिक्स में पढ़े हमने, लेंथ. So based on this mass, MLT and also हमने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़े हैं. तो ये सारे फॉर्मूलाज प्रोडक्शन में आते हैं. पॉइंटर्स, पावर. तो देखो इसके लिए पावर यूज करते हैं. पावर पावर के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, एनर्जी. तो एनर्जी का मतलब ये हो गया क्या, KWH, स्टैंडर्ड वैल्यू KWH. और जैसे एनर्जी मैंने यूज किया तो एनर्जी के लिए देयर आर फ्यू दिस क्या बोलते हैं इसको यार, यूनिट ऑफ मेजर आर अलॉटेड टू दैट व्हिच इज ओनली रेलेवेंट फॉर दिस एनर्जी. सो वो हमें जो दिख रहे थे यहाँ पे, ये जो दिख रहे थे ना यहाँ पे इन दिस वन, यहाँ पे जो आ रहे थे ना यहाँ पे KWH क्यों आ रहे थे यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेटिंग. अगर यहाँ पे एनर्जी नहीं डालेंगे हम, this will not come there because energy system को समझ में आता है that okay, energy means that it is basically only power. अब it could be joule, it could be power, megawatt, unit hour, per hour, kilowatt hour, kilojoule, gigajoule, so that we can use as per our requirement. Generally we use KWH, that's why we give it here, or we can give it by default also here as we have already given. So ये ऐसे डिफाइन होती है देखो यहाँ पे कैन बी पैरामीटर. उसको SAP से कुछ टर्म टेक्निकल नंबर दिया जाता है. सो ये तो हो गया उसका बैकएंड नंबर. अब इस नंबर के साथ फॉर्मूला बनता है. सो OP T फॉर्म, ये तो हो गया इसका ये. अब यहाँ में फॉर्मूला डिफाइन करवा दो. इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, देखो सेटअप के लिए दिखाते हैं पहले. सेटअप के लिए देयर इज नो पैरामीटर, लुक देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन, कुछ नहीं है. सो इट मींस इट विल बी फिक्स्ड. इफ यू असाइन द फॉर्मूला स्टिल इट विल बी फिक्स्ड, इफ यू डोंट असाइन द फॉर्मूला स्टिल इट विल बी फिक्स्ड ओनली, एज आई सेड. सेकंड is machine. Machine there is a formula given. So SAP 02 means what? 02 means machine. Look, 02 means machine. So machine running hours into this is into 09. 09 means operation quantity. Operation quantity means order quantity. कि कितना production कर रहे हैं? What is the production quantity? So machine running hours is suppose 5 hours. Order quantity is 1000. So 1000 is equal to 5. 1000 into 5 is equal to 5000. 5000 divided by SAP 08. 08 means base quantity. अब base quantity is again, जो bomb में base quantity हम देते हैं ना, this is the base quantity. Ajay ji, this is where the base quantity is very important, which we give in the bomb. So base quantity is suppose 1000 again. So 5000 divided by 1000 is equal to how much? 5, right? So 5. That's it. ये कुछ काम का नहीं. So this is how system calculates backend में. So 5. Now what calculation comes is the 5 as in 5 hour came in, okay, of machine running time. So इसमें calculate के लिए 5 आया.
अब उस 5 को सिस्टम विल मल्टीप्लाई विद द कॉस्ट ऑफ पर आवर which will assign in here. So 5 hours is the machine running hour. 1 hour of machine cost would be 100 rupees. So 5 into 100 is equal to 500 rupees will be the cost. Getting my point, guys, here? कि system 500 रुपए कैसे उठा के लाया? So all this calculation happens automatically in backend based on these formulas, based on the assignment of these values here. Okay. Here the basically the cost parameter, that will be an offline calculation by the finance team. Sorry, come again. The cost, the multiplication, maybe the rate factor, that is an offline activity being calculated by finance based on the So in parameters. general, when first time when you go to SAP, no, so that's offline activity for once. But once you are in SAP, you are doing everything in SAP, then system automatically calculate these things. And system let you know, like system let costing people know or finance people know that, okay, this is the cost coming according to your masters, according to your hours and all. But if you feel there's a deviation, so they can change that accordingly. So there are few activities happens in the backend for costing as well to re-evaluate the prices of these activities. Suppose this time I've told you, as I told you, for 1 hour of machine learning is equal to 100 rupees of cost. But if they feel like, oh, this is something not right, this can be improved, or maybe this is 110, not 100. So what will happen when you calculate these things, no, or when you run this product and all, system automatically propose you that this is not 100, this is actual should be 110. So there's an activity in backend, there's a different T code for that, which is useful for costing and financial people. They understand that does that part. Once they calculate the cost now, they get to know, okay, though this cost we use is 100, but which is wrong. We should have used 110 because this is how it calculated by system. So when they do 110, so what happens is next time, system automatically propose them and system automatically use 110 only for the calculation, not 100. So all these things, there's in different functions are also there in backend, which make sure that no finance department or costing department has to do any offline activity in backend. So everything they can do it from online only, but this all depends upon the functions. In production planning, we don't use those functions. We don't take care of those functions. But for financial costing people, they take care of that part and they ensure that the cost, which is most efficient as per the requirement, that should be assigned and activated in relevant functions and for the calculations. Okay. Right. Correct. So this is a second master. Third is routing, which is CA01. So guys, we will complete the masters today. Okay. As we already have done a lot of things. Or maybe if you say it is a lot, stop me there. We'll complete for next class. However you feel fine. आपको लगता है बहुत ज़्यादा हो गया है, so you can stop me there. If you say, let it go, I can go ahead. My agenda for today is to complete the masters. So 2 are done, 3 are done. Material master, bill of material, and box center. Now 2 are left, which is one is production version, and one is routing. Okay, better let's do complete all these 2. Then you can have this video recorded recorded lecture, and you can watch it again in your free time if you have any confusion. Okay, so T code for that routing is CA01. Okay, so T code for that is CA01. CA02 for change is CA03 for display. Okay, I hope that's correct. Guys, let's take a break for 5 minutes in between and let's start again. Okay, let's take a water break in between 5 minutes. Okay, sir. 10 minutes, sir. Yeah, let's resume at 9:40. Okay. Okay, fine.
Okay. I hope guys, are you back? Yes, sir. Yes, sir. Rajesh, Girija, Yes, Ratan. Bhagwat, Girija. Yes, I am back. Okay, let's start back. So the next master is routing. So how many out of you does know about routing or ever heard of routing? What is routing, guys? Any basic idea at least? Maybe whoever used SAP might have an idea. Raju, maybe. सर यस सर राजू क्या चीज राउटिंग क्या चीज होती है? सर एक एफजी को बनाने के लिए जो भी मशीन आपको रिक्वायर होती है लाइन से इन प्रोसेस जो भी मशीन है उसको राउटिंग बोलते हैं सर. Okay. So guys, to explain in English and Hindi, routing is basically a sequence of operations we need to do to manufacture a FG or SFG. In simple. Similar way for Hindi, एक FG SFG को बनाने के लिए जो भी ऑपरेशन हमें करने हैं, तो what operation will happen on which machine, which component will be used on that machine, and all these activities you assign in proper sequence in routing. That is the master. And this is the reason I told कि bill of material and work center or machine is master are a prerequisite, because अगर वो दोनों नहीं होंगे तो we will not be able to assign, as I said. So that is why it is important. So as in the sequence is always important, the metal master or item master must be there for RM, PM, FG, SFG, then the bill of material, then work center, then routing, and then production version. Okay. So again, as I said, very common, most important thing for us would be that we must have a material master as in created. Allow me a second, guys. I'm getting a call. Hi, buddy. हाँ आया तो था करके आया होगा शायद सिद्धांशु ने रखा होगा अंदर. अच्छा आया है, शायद आया है. कर दे. हाँ ठीक है. हाँ ओके. So material, is very important for us. As I always say, is material plant. So as we will enter material plant here, and similar way, we can, create this date is again the current date. You can change it, as I said, in the bottom below material. The initial structure is same. Again, once you press enter, you have two things. So in this case, routing was already there. So to create it, system, in this case, it directly goes to header first and then to operations. But in the below material, we first go to item and then we go to header. So take anyhow, that's the structure is there. But the important thing is that these are the important values. So this is already assigned and everything is there. This is a mandatory field uses. So uses हमारे production वाले हर master में uses आपको देखने को मिलेगा. इसका uses क्या है? Production में, engineering में, R&D में कहाँ है? So similar way we know it. This is for production only. Let's say in production. Then overall status. So status का देखो simple सा meaning होता है guys. I think मैंने bomb में भी आपको नहीं बताया. Let me go to bomb first. Again back. यहाँ पे भी हमारे पास status होता है. Status का मतलब क्या होता है? That is the bomb active or inactive? Okay? Active मतलब simple चीज है कि it will be usable. Inactive means it will not be. Very simple logic. Even though if you will try to forcefully try to use that, and if the status is inactive, it will not allow you to use that. It will give you error if the relevant bomb is not available or not active. Okay. Similar way in routing, we have these 4 entries here. वहाँ पे वो simple है, वहाँ active inactive है. लेकिन यहाँ पे there are 4 things. Created means कि आपने routing create करी हुई है, लेकिन it will not be usable because it's just in created mode. So unless until you release the routing, the status is not released, it will not be usable anywhere. So generally क्या होता है, कभी-कभी master बनाने के लिए just we put them in created status, and once we want to use that master, you put that in release status. So that also can be done as first thing. Second, release and also can be done on 3 ways. One is for order, one is for costing, one is for both, like general for all. So generally we use general one, but there are few circumstances where for order you can have a different routing, for costing you can have a different routing.
What do you mean by that? Any idea guys? क्या मतलब हो सकता है कि ऑर्डर के लिए अलग राउटिंग और कॉस्टिंग के लिए अलग राउटिंग, मतलब क्या, what can be the difference, at major level in simple basic terms? So it may be like for order, we need to, do this routing for each and every stages. And for Mm-hmm. costing, there might be possible that there are selective stages from where we can get Exactly. the data cost. Perfect. बिल्कुल perfect. Exactly. So it might happen like for costing, we want to, do the costing in different way, and order we want to use in different way. Very simple logic. So if you want to do it separate segregation, then we can use this way. Generally, we use, as I said, generally we use this one only, least generally. Okay. Because generally there is no separate routing for that, but SAP has given, as a function, if certain client want to use that in separate way. Okay. This is then, there is around not required. So only important thing is these two. But again, as I said, here also there's a planner group there. Not mandatory, but yeah, you can use that, like a name or a group or person like that if you want to use. Okay, the planner group. In user section, when please go in that detail, like there sequence uses general data uses. Mm-hmm. So there was when you click there, there was some sequence was like 1, 2, 3, 4, then 51, 53. Mm-hmm. Why this is so? Like if you see Okay. for GR model inspection, GRX is 51, 53. Like, is there any specific reason behind this or what? Yes, there is reason. So for production, these are the ones we generally use. Okay. So other than production, also there are more different task lists we have. Task list मतलब क्या होता है? These are the task lists. Routing is one of the task lists. Master recipe you must have heard master recipe from from me. Okay. So master recipe is basically used in a process industry, different master for production only. In production, discrete industry, we spoke in the first lectures, it is routing we use. So for master recipe, task list type is different. And for routing, it's N. Like technically, it's N in for routing. Number two is for master recipe. So for master recipe, we have these numbers are different for use. These things are same only. Just that for different tasks they use the different numbers. That's the only thing, nothing else. This is not relevant. So there might be numbers, many more numbers apart from this as well, right? Exactly. So For number different occupied. industry. It's basically that somebody else is occupied the number. That's it. Nothing is a big deal. But for our uses, these are the few selections which we need, which we can use. That's why it is there. Out of this one, only one we will use at a time. So in general, as we are the production guys, we generally use production only, right? As I said. So it's yoga. Then let's go to routing operations. यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे दिस सीक्वेंस आता है, पर्टिकुलर मटेरियल को बनाने के लिए हमने बॉम्ब दे दिया, इस मशीन को बनाने के लिए हमने मशीन्स क्रिएट कर दी, वर्क सेंटर क्रिएट कर दिए. नाउ व्हाट इज दैट सीक्वेंस टू क्रिएट this product? That like suppose if I give you an example, like real time example of tablet manufacturing. So this is how it happens. So generally first is the mixing, then grinding happens, then compression happens, then coating happens, and then finally packaging happens. This is the real time. This is how it happens. So these 5 operations happens in the same sequence. So for mixing, there's a different machine we use, mixing machine. Suppose in this understanding, I'm given this name like that. For grinding, it could be some different machine. For compression, it could be some different machine. For coating, it could be coated machine or something. Or packing could be packing machine, something. So it could be, we can give the names like that also. As I said, CNC, we can give CNC, or maybe we want to use some different name, like for packing, you can give packing one machine. Or if you want to give a line, as in packing line 1, packing line 2, your 2 lines. So you can give packing line 1, packing line 2 is name of the machine as well. So it all depends how you want to give the name. So here basically we define that to you. This is the prerequisite. Why? Because अगर ये master हमने नहीं बना रखा होता है, तो system में हम यहाँ पे assign नहीं कर पाते. That's why the prerequisite is the work center में पहले बनाते हैं, below particular में पहले बनाते हैं, and then we assign in this job. So इसमें mostly the work is to assign that things. अब इस master की वजह से इसकी जो अंदर की एक्टिविटीज है, व्हाट इज द अंदर की एक्टिविटीज, ये जो चीज़ है, हम ये जो मशीन लेबर जो हमने असाइन किए हैं इन आवर वर्क सेंटर, वो ऑटोमेटिक वहाँ से उठ के आते हैं. This is not coming automatically. This is coming because we have given there. And here also we, as I told you, we are also we assigned this thing. Let's sign this first. Okay.
Here also we assign the control key. Okay. यहाँ पे भी हम देते हैं 0 1. Okay. This is how this happens. This is how the routing looks like. ऐसा routing बनती है. अब इसमें भी each operation. So this is देखो in simple terms. Let's understand in brief level first. What I said again, sequence operations which we do, we assign it here. First, which will happen, second, what will happen, third, what will happen, fourth will happen, fifth, what will happen. Each operation which machines and work center will be used, that we can assign. If you don't want to use, like no machine will be used, then we can keep it blank as well. It's not important that we have to use it something. So if machine use नहीं हो रही है, तो we can keep it blank as well. It's like that. If use हो रही है, तो we can assign that. जैसे कोटिंग book में machine use नहीं होगी. Coding is a simple process, so we can keep it blank as well. But अभी हो गई एक तो ये sequence मोटा मोटा. Now in each operation wise we'll have to define. For mixing the base quantity suppose 1. तो for 1 एक टेबलेट की मिक्सिंग करने के लिए या 20 की मिक्सिंग करने के लिए how much machine time we will require, how much labor time will. So here we give that time. और देखो ये होता है एक्टिव टाइप असाइनमेंट. दिस इज द एक्टिव टाइप असाइनमेंट जो अपने वो दिखाया था कॉस्टिंग में आपको, सॉरी इसमें इसकी कॉस्टिंग टाइप में जो दिखाया था लास्ट में. सो यहाँ पे हम टाइम देते हैं, वहाँ पे हम टाइम नहीं दिया ना मैं कहीं भी, वहाँ जस्ट गिवन दैट आर एंड जस्ट द असाइनमेंट ऑफ दिस एक्टिविटीज. Here in the routing we use the assignment. Okay. So for operation 1, suppose mixing we need 0.5 hour, मतलब 30 minutes. So as I've given R as an assignment, so we can give it here, or maybe if we need 1 hour, so I can assign 1 year. Labor we need maybe suppose 2 hours, so we can assign it like that. So you okay complete. Similarly, let's come out. So for operation 1, this is the activity we'll need. For operation 2, so grinding we might need maybe 3 hours for machine and 5 hours for labor. So for our second option, this is how it will happen. For third operation like this. So for each operation wise we can assign this. So for this one, 10 minutes is a fix for that. Machine we require maybe suppose 5 hours. Labor we need 8 hours. Power consumption is 5 kilowatt per hour. Okay, so 5 kWh. This is how it happens. So based on that, based on these activities, ये system calculate करता है कि this और ये इसके अंदर वो assign करते हैं hourly rate कि 1 minute is equal to 10 rupees. So 10 into 10 is equal to 100 rupees. Like that system calculates. और जो cost होता है वो cost center में जाता है जो हमने work center में assign किया है, as I told you. So this is how we define that each operation wise. So each operation wise, these things we given, these machines we assign, and these things we assign. Now next is, as of now we have not assigned material. We have assigned the work center, we have assigned the sequence. What is the sequence for the manufacturing of this material? But still we need to allocate the material. Okay. So this is the BOM. This is the assignment of the BOM. Okay, for this material, this routing, this material, our BOM is this one. Okay. So there are 3 components. Suppose there are 3 raw material we need. So suppose we don't need material in first operation. We need operation to the assignment. So ये हमारा operation है 5. Mixing, grinding, compression, coating ये assign किया हमने. Suppose you need a component in mixing. One component in mixing, one is then coating. Suppose so एक मैंने assign कर देखो इसमें देखो आगे आप automatic 10. Second I need maybe suppose second operation assignment in coating. Coating assign हो गया एक. Third is I want to use this third one onto packing. So maybe suppose this is a packaging material, this was coating material, this is a simple raw material. यहाँ पे हमारे 3 material, that's why I'm giving you the example. This can be for many. Suppose there could be if there will be 15 materials, 3 is for raw material, 2 are coating material, or 5 are packaging material. So that's also you can assign. So the number is not an issue here. So 3 material you can assign to operation 1, 2 material you can assign to operation 2, 3 you can assign to something else. So this assignment you can do according to your need, according to recall. So this is how we create the routing. This is the definition of routing. अब बताओ क्या confusion है इसमें? एक बार फिर बता दीजिए. Sorry? एक बार रिपीट कर दीजिए. यार भाई ये मत किया करो यार. After this much efforts, same thing here. Right away you just repeat it. Confusion क्या है? Tell me that, no? I'll explain it to you. What is the confusion? समझ में नहीं आया. क्या समझ में नहीं आया? बताओ मुझे क्या समझ में आया क्या नहीं? सर मेंडिंग ग्राइंडिंग जो आप बोले ना उसके आगे जो मटेरियल है. ओके मतलब क्या समझ में आया? एग्जैक्ट बताओ, जब कहाँ तक समझ में आया चलो पहले ये बताओ, देन आई एक्सप्लेन टू यू. सर मेंडिंग बिल्कुल ग्राइंडिंग जीरो ये सब मत लेते हैं किया उसके करो, ये बाद. बताओ कि अच्छा कहाँ तक आया आपको, 10% आया, 20% आया? हाँ बताओ जैसे बताओ तो सॉरी. समझ में आया मेंडिंग ग्राइंडिंग जो आप लिए ना, मेंडिंग ग्राइंडिंग जो लिए फिर उसके बाद ये जो आपने बताया मटेरियल वो ले लिया उसके बाद. देखो मैं बताता हूँ, चलो वापस बताता हूँ, चलो कोई नहीं. बट बड़ी प्लीज बता दिया करो बीच में उस टाइम भी जब है ना, प्लीज कि यार कहाँ चीज समझ में नहीं आ रही चीज है ना.
जी क्योंकि एक जो ले होता है ना, वो एक वो वे बना होता है, फिर बाद में वापस ना उसी समझ में नहीं आ पाती उस लेवल पे। ये नहीं आओ, ठीक है। देखो ये जो हम अटेंड करते हैं ना यहाँ पे, दिस इज बेसिकली ये क्या क्या ऑपरेशन हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर मेटल को बनाने के लिए, ठीक है। एक टेबलेट को बनाने के ठीक लिए क्या क्या ऑपरेशन होते हैं इन रियल टाइम फिजिकल शॉप फ्लोर में, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि क्या क्या मशीन हो रहे हैं, हर एक ऑपरेशन पे कौन सी मशीन या कौन सा मशीन यूज हो रहा है हमारा। मिक्सिंग के लिए मिक्सिंग मशीन होती है, ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडिंग मशीन, कंप्रेशन के लिए कंप्रेशन की कोई मशीन होती है, कोटिंग के लिए कोई मशीन जनरली यूज होती है, पैकिंग के लिए पैकिंग लाइन यूज होती है। दिस इज ऑल जनरली असाइन। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन की वाइज हमने मशीन असाइन कर दी। फिर हमने क्या असाइन किया कि अच्छा ईच एक्टिविटी में, हर एक ऑपरेशन में हमारी मशीन का टाइम कितना है, लेबर का टाइम कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, दैट आल्सो वी हैव डिफाइंड हियर टू ईच एंड एवरी ऑपरेशन एक्टिविटी। ओके, एंड दीज आर कमिंग फ्रॉम दिस वर्क सेंटर असाइनमेंट। ये हमने यहाँ पे तो असाइन किया नहीं था, ये कहाँ से उठ के आ रहा है, इस वर्क सेंटर की मास्टर में हमने असाइन की थी एक्टिविटीज ये, और ये आर्स वगैरह हमने वहाँ पे असाइन किए थे, और ये एक्टिविटी वगैरह वहाँ से आ रहे हैं। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम टाइम देते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए कितना टाइम लगेगा सेटअप में, कितना मशीन में, वो हम ये डिफाइन यहाँ पे करते हैं। थर्ड, लास्ट एंड फाइनल, किस मशीन पे किस किस ऑपरेशन पे हमें मेटल का यूज होता है, किस मेटल पे हमारे मेटल का यूज होता है। जैसे मिक्सिंग के लिए हमें मिक्सिंग के लिए मेटल तो चाहिए ना, क्या मिक्स करोगे आप। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे अलोकेट करते हैं, असाइन करते हैं मटेरियल्स कि कौन से मटेरियल है जो हमारे मिक्सिंग के लिए यूज आने वाले हैं, 1 है 2 है 5 है 10 है। तो यहाँ से हमारे पास बिलो मटेरियल में 3 ही मटेरियल, इसलिए मैंने एक असाइन किया अलग अलग। बट अगर मेरे पास यहाँ पे 50 मटेरियल होते हैं तो आई कैन यूज सपोज रोज कोई भी 10 मटेरियल होते हैं तो मिक्सिंग में यूज आए, तो वो 10 मिक्सिंग में यूज आ गए। कोटिंग के लिए अगर बॉम्ब में कोटेड मटेरियल यूज करते हैं तो कॉटन मटेरियल को हम हमारे कोटिंग वाले ऑपरेशन में असाइन करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग असाइनमेंट कर सकते हैं हम इफ यू वांट। तो बेसिकली सर ये बॉम्ब का एलोकेशन है, राइट? बॉम्ब का एंड वर्क मशीन्स का लोकेशन राइट। इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो ये बेसिकली क्या ना, एक ऐसा रूट है, ये एक रूट है बेसिकली एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। क्या 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 एक्टिविटीज किस किस तरह से किस किस सीक्वेंस में आप करते हो, वो प्रॉपर पूरी डेफिनेशन डिटेल्स इसमें आती है, इस मास्टर में आती है कि आपने क्या ऑपरेशन करना है, किस ऑपरेशन पे आपको कितना टाइम लगेगा, कौन सी मशीन पे होगा, कौन सा मटेरियल यूज होगा, और इस ऑपरेशन को करने में कितनी आपका मशीन आवर्स, कितने लेबर टाइम, कितनी एक्टिविटीज क्या क्या लगेगी for each operation. So this master define that actually. This is what it tells. Okay. अब समझ में आया? हाँ सर सर। किसी और को कुछ कंफ्यूजन? ठीक है, let's save this. So this is how it happens. Again, जैसे बॉम्ब हमारा एक मटेरियल के लिए we can create more than one bomb. Similarly, we can have more than one routing as well. So again, as I said, we give 5 operations. So that's generally what happens is, in pharma companies, there can be 2 kind of tablets. So one we see, color coated tablets. देखते हैं ना हम मेडिकल सिस्टम में जाते हैं तो कुछ कुछ रेड होती है, कुछ ब्लैक, कुछ येलो, कुछ ग्रीन, पिलो, अलग अलग कलर की होती है वो कलर क्या है, दैट इज द कोटिंग। कोटिंग जो करते हैं ना, जो बता रहा हूँ मैं आपको कोटिंग ऑपरेशन, उस कोटिंग ऑपरेशन में क्या होता है, उस किसी भी टेबलेट पे, जनरली टेबलेट व्हाइट कलर की होती है, उस पे आप जिस कलर की कोटिंग कर देते हो टू प्रिवेंट वो कुछ खराब ना हो या कुछ इशू ना हो उस पर, तो इसके लिए कोटिंग कर दी जाती है अलग अलग कलर की केमिकल्स की। तो उस केमिकल को उस चीज ऑपरेशन को हम बोलते हैं कोटिंग ऑपरेशन। उसके लिए मशीन यूज जनरली नहीं होता है। कोटिंग मटेरियल होता है, उस कोटिंग मटेरियल पे टेबलेट को उस कोटिंग मटेरियल में डाला जाता है और निकाल लिया जाता है, बस वो कोटिंग हो गई, दैट्स इट। सो दिस इज आई टोल्ड यू कि वो मशीन का असाइनमेंट कहाँ है, क्या है, कैसे है, वो सब उसके अंदर आता है। ओके, दिस इज हाउ इट हैपेंस। गॉट इट गाइस? अब नेक्स्ट एंड फाइनल इज प्रोडक्शन वर्जन. Production version T code is C223. Okay, C223. So there is only one T code for production version. So generally देखो बॉम्ब के लिए हमारे पास 3 T code है, चेंज, क्रिएट एंड डिस्प्ले के लिए, राउटिंग के लिए भी 3 T codes, वर्क सेंटर के लिए भी 3 T code, like CR01, CR02, CR03, बॉम्ब के लिए CA01, 002, CA03, राउटिंग के लिए CA01, CA02, CA03, मेटल मास्टर के लिए MM01, MM02, MM03. But for routing we have only one operation, one T code, C223. इसी से हम डिस्प्ले कर सकते हैं, इसी से हम क्रिएट कर सकते हैं, इसी से डिलीट कर सकते हैं, इसी से चेंज कर सकते हैं. एवरीथिंग इज फ्रॉम हियर ओनली. Okay, there is nothing more, nothing less, nothing is like that. Whatever we have, everything is here only. So to display it, अगर ऑलरेडी बनी हुई है तो just directly double click on that, it will display like that. If you want to change it, you can change it in here directly. If you want to delete it, ये delete का बटन रहा है यहाँ पे, you can delete it directly, just delete. ठीक है. If you want to create a new, you can create new here also. Create new आगे. So इसलिए this is only one T code given for this one. अब let's create a new one. इसको let's not understand it and create a new one for same मतलब like similar way. देखो बॉम्ब, राउटिंग
production version and machine, everything we can get more than one for a material. So material is 501. किस मटेरियल में 501 के लिए प्लांट हमारा बाय डिफॉल्ट है सेम. प्रोडक्शन वर्जन का जो डिजिट है वो 4 डिजिट में होता है जनरली. सो एनी 4 डिजिट यू वांट टू गिवन यू कैन गिवन हियर, और आप डेफिनेशन आप डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हो. एक मिनट. सो टेक्स्ट ठीक है, ये आपका मटेरियल डाल दिया आपने. एनी नेम यू वांट टू गिवन यू कैन ABCD XYZ और एनी 4 डिजिट सेम नंबर यू कैन गिवन हियर. तो ओनली 4 डिजिट ओनली वी कैन गिवन हियर एज एन टेक्निकल नंबर. जैसे वर्क सेंटर में 8 डिजिट दिया था ना, so here we can give only 4 digit number, and this description you can give in anything, like suppose maybe you can copy this one also, you can give in here. So this production version is for this material, simple, right? And like that's also okay. It all depends upon you. Then this is basically the status. Like if you want to lock, it's in different levels. So bomb में क्या था, inactive active था, routing में created release था, but production version में क्या है, lock unlock. If you want to lock it, unlock it, not locked it, so that you can do. So lock it for any uses. किसी पर्पस के लॉक करना है तो आप you can lock it, तो ये भी कहीं भी यूज नहीं होगा. If you want to not lock, मतलब यूज होगा जहाँ यूज करना है. तो सिंपल वे, डिफरेंट टर्म्स बेसिकली. देन ये आता है इसकी वैलिडिटी डेट, कि कब से वैलिडिटी, आज की डेट से टिल एंड, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक, अनलिमिटेड टाइम तक वैलिड है. बट इफ यू वांट टू चेंज दिस टू टिल दिस मंथ और एनीथिंग, यू कैन चेंज दैट आल्सो, ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इस मास्टर में क्या देखो, जस्ट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड दिस मास्टर. तो बॉम्ब का देखो क्लियर मीनिंग था. बॉम्ब बेसिकली मीन्स दैट द कंपोनेंट यू नीड टू मैन्युफैक्चर a material, FG material or something, that you give in the BOM, bill of material master. Work center, you give the machine, like which machines or which capacity or which like activities you require on that machine, that's why you create a work center master. Routing you create to make sure that, okay, to manufacture this product, what is the operations we need to do in which sequence, on which operation, which machine will be used, like that we assign in the routing, pura proper detailed plan. But production version is nothing. Production version is the assignment of routing and BOM basically. इन दो मास्टर को मिक्स असाइन करता है, दैट्स इट. कुछ नहीं है इसमें, टेक्निकल मास्टर है ये. ओके, तो प्रोडक्शन वर्जन इज नथिंग बट a master wherein can assign the routing and bill of material in one master. That's it. This is technical master basically, simple. तो यहाँ से हम लिखते हैं राउटिंग का. क्या देखो, मैंने क्या बताया आपको, ये देखो गाइस, कौन था, आई थिंक सुमित और आप किसने तो पूछा था टास्क लिस्ट टाइप, जो पूछा था ना आपने. हाँ सुमित, यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन. Yes, I asked that. So this many टास्क लिस्ट टाइप वी हैव. ये सारी टास्क लिस्ट के टाइप है, अलग अलग. तो हर एक टास्क की टाइप में वो अलग अलग नंबर यूज किए हैं, बस वो कुछ नहीं है इसलिए. तो हमारे लिए काम का क्या, देखो एक राउटिंग बनाता है एन फॉर राउटिंग मास्टर स्पेसिफिकली 2. तो ये दो हमारे काम के हैं. ऐसे कैसे क्वालिटी में देखो, एक इंस्पेक्शन प्लान होता है, उसके लिए क्यू है, एक रेट राउटिंग होती है, उसका आर है, एस है, टी है, ऐसा अलग अलग है. देखो एक इसमें भी अलग अलग, देखो इसमें भी 2, कहीं 02 दिया हुआ है, कहीं ABCD दिया हुआ है, कहीं ऐसा अलग अलग दिया हुआ है. So it is some technical backend things are there. So then don't worry about these numbers initially. Important is that what we are using. So we are assigned the routing because we have created routing. So we need to assign that for this material, what routing we created. Suppose routing we created this one. If you don't need to, if you just go here, you can see. So for this material, there are 2 routings created. One we have created अभी जो है हमने वो एक पहले की बनी हुई है. तो आज की डेट में बनी देखो एक पहले की बनी हुई है. So if you want to assign the latest one, just assign this latest one. And then bill of material. So आपको वो याद नहीं जरूरत नहीं, because there are 4 bill of material created for this material plant, which you can see directly. मतलब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, number and all nothing. Just click on these search button in the back, or like this one, this one, this one. हर जगह. What is the importance of this routing group? When you I'll tell you that. There's a very, very big significance of this production version. This master actually. Okay. Okay, so assign maybe latest one, third one. So this is the assignment. So once you click enter, system checks it that is it valid or not. तो यहाँ से चेक बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं ना, तो देखो ये बता देता है आपको कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इज इट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो भी वो आपको बता देता है. यहाँ पे एक मैसेज देता है सिंपल. सो इफ इट एग्जिस्ट, एवरीथिंग इज ओके, देन इट ग्रीन हो गया ऑटोमेटिक. यहाँ पे पहले येलो था, मतलब वो अनकंक्लूसिव था डिसीजन. नाउ यू इट इज एग्जिस्ट, इट डज एवरीथिंग इज ओके, इट मेड इट ग्रीन. अगर यहाँ पे कुछ एरर होती, इफ समथिंग वुड हैव नॉट हैव बीन राइट, इट वुड हैव बीन ग्रीन, येलो, सॉरी रेड. ओके, यहाँ पे ऑटोमेटिक तो फर्स्ट वाला लाइन है ना, दैट इज रेड वन, सेकंड वन इज the yellow, and third one is green. So we know that is simple traffic lights we have. So that simple traffic lights also we use in SAP to assign these things. So this is how we create this master, and then we save it finally.
So now look, there were only one production version there. Now we have created one more now. So there are two now. Now the significance of this this production version I'll tell you when we will go in the next lecture, which is MRP. In MRP, this MD01, here we'll get to know what is the significance of that production version master. Okay. I hope this was very much clear to every one of you and you have understood the meaning and everything of this thing. Girija. Hello, Girija. You are not audible if you are speaking. Anyhow, okay. Bhagwat, Girija, Raju, Rajesh, Sumit, Subham, guys, सबको समझ में आया what we have studied today? So these are, the four masters we did and are the only masters and every master has a different significance in itself. Like जैसे बॉम्ब का मैंने आपको बताया कि बॉम्ब बेसिकली कंटेन्स द कंपोनेंट्स जो भी यूज होते हैं बॉम्ब मटेरियल को बनाने के लिए, चाहे एसएफजी हो, चाहे आरएम हो, राउ मटेरियल हो, चाहे पैकेजिंग मटेरियल हो. सिमिलर वे राउटिंग कंटेन्स एवरीथिंग कि कौन से ऑपरेशन पे कौन सी मशीन असाइन होगी, कौन सा मटेरियल उस पर यूज होगा, विच एक्टिविटीज विल यूज, उस एक्टिविटी का आवर्स कंजप्शन कितना होगा, प्रॉपर डिटेल्स में प्लानिंग होती है उसकी. अच्छा, किस प्रॉपर प्रोडक्शन प्लान बनता है, बेसिकली प्रोडक्शन सीक्वेंस बनता है. कैसा, व्हाट इज द सीक्वेंस टू डू एक्टिविटी फॉर दैट टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट. And then production was is completely technical master. That way, there what we do, we generally assign the routing and bill of material basically. And I'll tell you the significance technically. So this is a technical master. There's no big significance in production for that, but it's just to make sure that further activities, जो भी planning है या जो बाकी activities है ना, वो properly smoothly हो. That's why we create this production version. ताकि वो बाकी जो master है अपने, वो एक साथ link हो जाए और एक साथ link होके वो अपने बाकी में एक साथ use होने लग जाए ऐसा. अब नॉट 4 फील्ड हम यूज करनी पड़ेगी, मतलब बिलो मतलब अलग असाइन करना पड़ेगा, राउटिंग अलग असाइन करनी पड़ेगी, वर्क सेंटर अलग असाइन करना पड़ेगा, टू मेक श्योर दैट टू मिनिमाइज दिस थिंग्स, टू मेक इट सिंपल एंड इजी. SAP the people has created one master called production version. इसमें उन्होंने वर्क सेंटर एंड बॉम्ब दे असाइन कंबाइंड टुगेदर. सो अब इन राउटिंग बेसिकली एवरीथिंग कम्स अप, राइट. राउटिंग में देखो वर्क सेंटर भी आ रहा है असाइन ऑटोमेटिक, बॉम्ब भी असाइन हो रहा है ऑटोमेटिक, और सीक्वेंस भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है. सो राउटिंग एंड बॉम्ब असाइन करके once you save it and once you run the planning MRP run, सिस्टम क्या करता है प्रोडक्शन वर्जन से, प्रोडक्शन वर्जन की जो डिजिट, गाइस राजेश प्लीज अंडरस्टैंड. सो सिस्टम, व्हाट सिस्टम डज, द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट इज, सो फ्रॉम प्रोडक्शन वर्जन व्हेन यू डू द प्लानिंग, व्हाट सिस्टम डज इज सिस्टम रीड्स दैट प्रोडक्शन वर्जन, means system reads the bill of material and routing assigned to it. So once system reads the bill of material, system understand, okay, what are the component will be needed for that material for which you are doing the planning. Similar way, if you when system reads the routing, system understands that what is the sequence of operation it will be done, and on each operation which will be machine will be used, what is the capacity required, and all these things system checks. So that's how system understand from backend. Okay, from only single master system understand, okay, which is the component used, which is the machine used, how many operations we need to do, and all these things. That's why the production version is mandatory and important in this SAP PP. Okay, so this is the significance. Okay. Right, sir. And once I'll show you that also. Theoretically, I told you now. So in the next session, when I'll run the MRP, we'll understand that how it is coming and why it is coming like that. And uski wajah se kya how the planning is happening, how the proposals are being created automatically. So guys, up now, this is okay. Understand next lecture. But now very important thing that I need to highlight here is we have just like, I'm sorry we have not took the lectures in between last few days. But I covered how I made sure that the agenda I had of these things we have covered up till today. So we are on track and everything is okay. Don't worry about these things. I'll ensure everything we learn and we go smoothly. But the most important thing right now we have is now you need to do practice. These masters I have told you made you understand, and all these things you need to understand, you need to learn it again, you need to do the practice by creating the masters in system. That's how you will be master of these things. Otherwise you'll forget. I know these things because I've done a lot of practice and everything, and I know the significance. But for you guys to understand these things, you'll have to make sure that you do the practice by yourself, like in system. So ensure that आप practice करो, समझो चीजों को. जब तक practice नहीं करोगे, you'll not understand things. So खुद को practice करना पड़ेगा, समझना आना पड़ेगा. If face issues, go to Google, paste that error, whatever you are getting on Google, you'll get the answer.
SAP has a very big and very good community. So everything, whatever you face and everything, you can get help from Google very easily. You don't need to do anything. You don't need to reach out to me or anyone or anything. Just need to reach out to Google and just read out their blog. You'll understand the answer. Still, if you don't do, I'll answer your queries in the next lecture. Anything is सर fine. एक मिनट, हाँ जी. सर ये जो मटेरियल आप जो डालते हैं वो मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ वो नहीं लेता, मैं अपना कोई कौन वेबसाइट डालूंगी जिसपे मैं उस पे वर्क कर सकूं? कोई भी ले लो. You can create your any material in your system. सर इन्हीं में तो लेते, लेकिन सर वो नहीं लेता है जो आईडी पासवर्ड दिए ना सर, वो मटेरियल नहीं लेता है, वो डालता कुछ तो। क्या नहीं लेता है? सर आप जिस पे प्रैक्टिस करते हो वो भी मटेरियल लेते तो भी नहीं उसमें लेता है। मेरा मटेरियल नहीं लेगा ना वो. सर आपका हमारी सिस्टम अलग है. माय सिस्टम इज डिफरेंट. योर सिस्टम इज डिफरेंट बडी. यू हैव टू क्रिएट योर ओन मटेरियल. आपको जी अपना खुद का मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा ना. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. प्रैक्टिस के लिए आपको खुद की प्रैक्टिस करनी है तो आपको अपना मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा. आपको अपना बॉम्ब, अपना राउटिंग, सब कुछ आपको खुद को क्रिएट करना है, प्रैक्टिस करना है. तो जो मैं यूज कर रहा हूँ, डोंट यूज दैट. आई एम सेइंग वो मत यूज करो आप, जी है ना. बाकी मैंने आपको एक सर रिपोर्ट हमारे बताई है क्लास ना. में मटेरियल मास्टर के लिए मैंने आपको एक रिपोर्ट जी बताई है ना. MM60 करके एक डिकोड है. उसमें आप मटेरियल मास्टर जी अवेलेबल होते हैं. जैसे मैंने या किसी और ने बनाया होगा ना आपके सिस्टम में, उसमें अवेलेबल हो गया. आप वो भी यूज जी कर जी सकते हो. जरूरी नहीं आप नया बनाओ. उनसे आप रेफरेंस ले सकते हो, ओके। है ना. तो बाकी इफ यू नीड हो एनी सकता है हेल्प. जो मैं बोलो बोलो, सॉरी. सर क्या जो जो मेरे प्लान में चलता है मटेरियल वो मैं लेता हूँ वो भी नहीं लेता है, जो मेरे प्लान में चलता है ना मटेरियल, अगर हाँ वो जी. मैं बना के देता हूँ तो सर वो भी नहीं लगता उसमें। अच्छा, जी ऐसे कैसे यार? लेट मी नो हाउ इज इट. इफ यू आर ऑन सिस्टम लेट मी, बताओ मुझे एक बार. इफ यू नॉट सिस्टम देन शो मी द एरर. क्या एरर आ रही है, क्या इशू आ रहा है आपको? ठीक है ठीक है सो हिमांशु, यू ज्वाइन ओके नाउ. सर। Anyhow, okay. So guys, I hope this was a good lecture. You understood whatever you have studied. Again, I'm requesting you to please do the practice. जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है आप लोगों के लिए. That's the only thing I can say. You know, now the completely dependent on you, like how and how much time you can like, give into practice. Okay, you will have this recorded lecture with you to do the practice. So ensure that you keep this lecture downloaded with you in your like parallel open. And जैसे हमने पढ़ा है उसको पोस्ट करो, like वीडियो को आराम से देखो, आराम से ट्राई टू क्रिएट इट. और यू कैन गो टू इवन यूट्यूब एंड गूगल एनीवेयर. इवन यूट्यूब पे भी जाके आप देख सकते हो हाउ टू क्रिएट राउटिंग. उस पर भी देखो स्टेप बाय स्टेप. ओके आपको गूगल पे, यूट्यूब पे बता देगा आराम से आपको. इन केस यू हैव एनी इशू, ओके रेफरेंस फ्रॉम यूट्यूब एज वेल. कोई इशू नहीं है. और ऑफ कोर्स मैं तो श्योर भी सर आप टू मी एनी टाइम, हाउ यू फील, ओके फाइन, है ना. ठीक श्योर है, चलो गाइस देन. थैंक यू देन. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर. सर गुड नाइट। Right. या बाय.